हेलो व्यूअर्स। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप ऑलरेडी नंबर्स जानते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर तब आती है जब आप एक्सेल को सिर्फ डाटा एंट्री के लिए नहीं बल्कि कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। ये कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी अकाउंटिंग को मैनुअल से ऑटोमेटेड लेवल तक ले जाना चाहते हैं। हम बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, फिर फार्मूलाज, लिंकिंग, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस एंड स्टेप बाय स्टेप एक प्रैक्टिकल वर्क फ्लो बिल्ड करेंगे। यहाँ थ्योरी नहीं होगी, यहाँ रियल अकाउंटिंग लॉजिक को एक्सेल के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चाहे आप प्रैक्टिस में हो, जॉब में हो या अपना सिस्टम बनाना चाहते हो, इस कोर्स के बाद आप एक्सेल को अकाउंटेंट की तरह यूज़ करेंगे, सिर्फ यूज़र की तरह नहीं। अगर आप सीरियस हैं अपनी एफिशिएंसी और एक्सेल पे कंट्रोल इम्प्रूव करने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोगों ने एक्सेल स्प्रेडशीट में इस तरह का टेबल क्रिएट करना है। इसके थ्रू आप लोग टेबल मेक्स लाइफ वेरी इजी। आप लोगों की कैलकुलेशंस और आप लोगों के जो हैं वो टोटल खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा और आप लोग इसमें डाटा कंपाइलेशन कर सकते हैं। कैसे आप लोग इसमें बुक कीपिंग कर सकते हैं, अपना डाटा कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें एक ब्लैंक स्प्रेडशीट चाहिए। इसमें हम लोग अपने कॉलम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इजी सा एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। एक हमारा डिस्क्रिप्शन का आ गया, डेट का आ गया एंड अमाउंट का हम लोग कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको सेंट्रलाइज करके बोल्ड कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन के कॉलम को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं और अमाउंट के कॉलम को भी थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। इस तरह आपका ये टेबल के कॉलम्स आ गए। इसको आपने जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि आप अपने तीनों कॉलम्स को इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट के टैब में जाके आप लोग यहाँ टेबल को क्लिक कर लेंगे। ठीक हो गया। ये एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें देखें, इसने ऑटोमेटिकली आपके जो तीनों कॉलम आपने सेलेक्ट किए थे वो इसने सिलेक्ट कर लिए हैं वहाँ। और इस आप लोगों ने इधर ये चेक बॉक्स को क्लिक कर लेना है, माई टेबल एज हेडर्स को। ये आपके टेबल के हेडर्स होंगे तो इसको आपने चेक कर लेना है और फिर ओके क्लिक करना है। तो इस तरह आपका टेबल क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। इट्स वेरी इजी। और अब आप इसमें एंट्री कर लेते हैं एक 1 Jan 25 की। हम लोग डेट को फॉर्मेट कर लेते हैं। इसके लिए आपने कंट्रोल N1 को अपने कीबोर्ड में क्लिक करना है और अपना डिज़ायर्ड फॉर्मेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ये वाला फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। कैश सेल और एक 50,000 की एंट्री कर लेते हैं और इसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं इस तरह सेपरेटर करके। अब इस टेबल की जो खूबसूरती होती है वो ये कि आपने एक रो अगर आपने फॉर्मेट कर लिया तो नेक्स्ट रो को आपको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखते हैं कैसे इस तरह। देखें, अब हम सेकेंड एंट्री करते हैं। देखें आपका टेबल खुद ब खुद एक्सपैंड हो रहा है। 2 जनवरी की एंट्री कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सेंट्रलाइज कर लेते हैं और ये नेक्स्ट वाला भी खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ हम एक एंट्री कर लेते हैं 35,000 की। ये देखें सेपरेटर्स खुद ही हो गए, आपको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। 3 जनवरी की एक एंट्री कर लेते हैं कैश सेल एंड देन इसको हम 20,000 कर लेते हैं। ठीक हो गया। एक एंट्री कर लेते हैं हम 4 जैन की 15,000 की। ठीक हो गया। लास्ट एंट्री हम कर लेते हैं 5 जैन कैश सेल और इसको हम कर लेते हैं 25,000 की। ठीक हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि टोटल यहाँ कैसे क्रिएट करना है। टोटल के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इस विद इन एनी सेल आपने जाना है टेबल में। इधर डिज़ाइन के टैब को आपने क्लिक करना है। यहाँ टोटल रो का ये बॉक्स आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया। ये आपका टोटल इस तरह ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। इसको आप चेक कर सकते हैं। ये देखें 1,45,000 ही टोटल आ रहा है इसका। ये इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। अब हम एक आप कह रहे होंगे इसमें नेक्स्ट एंट्री कैसे करें। तो नेक्स्ट एंट्री करने के लिए ज़ाहिर है आप नीचे नहीं कर सकते, तो इसमें आपको एक रो क्रिएट करना है। रो क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है कि टोटल वाले इस सेल में आके आपने कंट्रोल एंड प्लस को आपने अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है। ठीक है। ये देखें इस तरह आपका नेक्स्ट रो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ एक एंट्री कर लेते हैं 6 जैन की कैश सेल। हमारा टोटल 145 आ रहा था, हम यहाँ 10,000 की एक एंट्री कर लेते हैं। ये देखें 155 हमारा टोटल हो गया है। इसी तरह यहाँ आगे आपने नेक्स्ट अगर रो क्रिएट करना है तो आपने कंट्रोल प्लस को क्लिक करना है अपने कीबोर्ड में, तो एक और रो
क्रिएट हो जाएगा। तो आप अपने इस टेबल को इस तरह एक्सपैंड कर सकते हैं। अब ये आप नीचे स्क्रॉल डाउन अगर करें तो आपका ये देखें, आपके जो आपने हेडर्स क्रिएट किए थे वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। इसके लिए आपने क्या करना है, एक सिंपल स्टेप है कि यहाँ इस जो आपका हेडर है उसके नीचे का एक सेल में आके आपने व्यू पे जाना है। व्यू के टैब में यहाँ आपने फ्री स्पेन को क्लिक करना है और यहाँ फ्री स्पेन कर लेना है। ठीक हो गया। ये आपका देखें, अब आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपका टेबल गायब नहीं हो रहा, आपको दिखाई दे रहे हैं अपने जो हेडर्स हैं। ठीक हो गया। इंडस्ट्री एक जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि ये रोज़ जो ग्रिड लाइंस हैं वो नहीं आती, तो ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए क्या करना है, Alt+WG आपने अपने कीबोर्ड पे, ये इसका शॉर्टकट है। ये देखें इस तरह ग्रिड लाइंस इसकी आपकी नहीं आ रही हैं, दिखाई नहीं दे रही। ठीक हो गया है। सो होपफुली ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह के फर्दर ट्यूटोरियल्स के लिए और लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग एक्सेल की स्प्रेडशीट में अपने अकाउंटिंग लेजर्स मेंटेन कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपने बिजनेस के लेजर्स, बुक कीपिंग उसकी कर सकते हैं। और सिंपली बाय डूइंग जर्नल में डबल एंट्री करके डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री जो है वो पास करके आप लोग इजीली ये इस तरह के लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं और इसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट। सो लेट्स स्टार्ट। एक ब्लैंक स्प्रेडशीट हमें चाहिए इसके लिए, और इसमें हम लोगों ने जर्नल क्रिएट करना है, जर्नल एंट्रीज अपनी पास करने के लिए। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, इसको एज एन एग्जांपल हम लोग यूज़ करेंगे आज। तो आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें। हम अपने जर्नल की हेडिंग दे देते हैं और हम लोग कॉलम्स यहाँ डिसाइड कर लेते हैं कि हमने क्या लिखना है। एक डेट का कॉलम आ जाएगा, एक अकाउंट कौन सा इफ़ेक्ट होगा, डिस्क्रिप्शन का कॉलम, रेफरेंस आप लोग दे दें अपने अकाउंट्स को, और डेबिट की एंट्री एंड क्रेडिट की एंट्री। ठीक हो गया। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम, इसको मर्ज एंड सेंटर करके बोल्ड करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसको भी हम सेंट्रलाइज करके बोल्ड कर लेते हैं। अकाउंट के कॉलम को थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। इस तरह हमारी ये जो है कॉलम्स हमारे आ गए। अब इसमें आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन सब कॉलम्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है एंड इंसर्ट के टैब में जाके टेबल पे क्लिक कर लेना है। इस तरह की एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है। उसने देखें ऑटोमेटिकली ये सारी आपकी जो रेंजेस थी ये सिलेक्ट कर ली हैं। अब यहाँ आपने आके माई टेबल एज हेडर्स को चेक कर लेना है, इस बॉक्स को, एंड देन ओके क्लिक करना है एंड आपका टेबल क्रिएट हो चुका है। राइट। अब हम लोग अपनी एंट्रीज जो है ये स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख कैश ऑन 1 जनवरी 2025, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। और टेबल की खूबसूरती ये है कि आप लोग जो है ये खुद एक्सपैंड होता है एंड खुद अपडेट होता है। आप लोग आगे देखेंगे कैसे। तो अगर फर्स्ट रो आप लोग इस तरह इसको फॉर्मेट कर लेंगे तो फिर ये नेक्स्ट रोज को आपको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुद फॉर्मेट हो जाएगा जैसे आपने फॉर्मेटिंग फर्स्ट रो की होगी। राइट। तो वो Ctrl+1 करके हम लोग डेट का फॉर्मेट को सेट कर लेते हैं। अपना डिज़ायर्ड फॉर्मेट आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 जनवरी 2025। ठीक हो गया। फर्स्ट एंट्री हमारी आ रही है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। सो कैश को हम डेबिट कर लेते हैं और बिजनेस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। रेफरेंस हम लोग दे देते हैं रिसीट वोचर, आप लोग कोई भी दे सकते हैं, रिसीट वोचर 001 एंड डेबिट 5 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। राइट। और क्रेडिट कुछ नहीं, डेबिट हमारा ये। तो इसकी हम भी सेपरेटर्स करके इसको हम ऐसे फॉर्मेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट रो में आपको जो है वो फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। ये देखें टेबल खुद एक्सपैंड हो रहा है। एक्विटी की हमारी क्रेडिट एंट्री होगी, हम लोगों ने इसको डिस्क्रिप्शन दे देना है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राइट। रिसीट वोचर हो गया आपका एंड 5 लाख की क्रेडिट एंट्री।
अब नेक्स्ट एंट्री हमारी है इन्वेंट्री परचेज ऑफ ₹1,50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एडम एंटरप्राइजेज ऑन 5 जनवरी 2025। ठीक हो गया। अब 5 जन 25 हमने इन्वेंट्री परचेज की है तो इन्वेंट्री हमारा डेबिट हो जाएगा इन्वेंट्री अकाउंट, और परचेज्ड ऑन क्रेडिट हम लोग डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, और इसको परचेज इनवॉइस हम लोग 01 का रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, हमने 1,50,000 की इन्वेंट्री परचेज की, ये डेबिट हो गई हमारी इन्वेंट्री। एंड क्रेडिट हमने किसको करना है, एडम एंटरप्राइजेस जो हमारा क्रेडिटर है, राइट। इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं इन्वेंट्री परचेज परचेज इनवॉइस आ गई, आपकी क्रेडिट एंट्री आ जाएगी इधर 1,50,000 की। ठीक हो गया। नेक्स्ट एंट्री हमारी है सोल्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जेम्स ऑफ ₹50,000 ऑन 10 जनवरी 25। ठीक हो गया। 10 जनवरी की एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। हम लोग सेल कर रहे हैं मिस्टर जेम्स को, तो मिस्टर जेम्स हमारे डेटर हो जाएंगे, मिस्टर जेम्स को डेबिट कर लेते हैं। सोल्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, ठीक है। सेल्स इनवॉइस आ जाएगी हमारी 01 है, इसको हम रेफरेंस दे देते हैं, और हमने इनको 50,000 की ये इन्वेंट्री सेल की है तो 50,000 डेबिट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट एंट्री यही हमारी जो है, इसका क्रेडिट इफेक्ट जो है सेल्स पे आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर जेम्स, राइट। सेल्स इनवॉइस आ गई हमारी, और 50,000 से हमारी जो सेल्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अब है हमारी एक एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की, incurred of ₹40,000 on 14 जनवरी 2025। 14 जनवरी की एंट्री, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो है हमारा डेबिट हो जाएगा। इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, और हम इसमें कैश पेड जो है अपनी रेफरेंस दे देते हैं। परचेज पेमेंट वोचर हम लोग कर लेते हैं 001, और हमने कितने की एंटरटेनमेंट की, 40,000 का एक्सपेंस इनकर हुआ, ये डेबिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट इसका जो है कैश पे होगा, और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पेड, ठीक है। पेमेंट वोचर आपका आ गया, और 40,000 से कैश क्रेडिट हो गई, राइट। लास्ट एंट्री हमारी है कंप्यूटर परचेज फॉर ₹10,000 ऑन 19 जनवरी 2025। ठीक है, हम कंप्यूटर परचेज कर लेते हैं, ये डेट है आपकी 19 जनवरी 25। ठीक है, कंप्यूटर, और यहाँ कैश पेड। ठीक है, पेमेंट वोचर हमारा 002 आ गया, और कितने का कंप्यूटर हमने किया, 1 लाख का कंप्यूटर हमने परचेज किया है, और क्रेडिट एंट्री आपकी आ जाएगी कैश में, परचेज्ड कंप्यूटर, पेमेंट वोचर, और 1 लाख आपकी क्रेडिट एंट्री। ठीक हो गया। इस तरह आपका ये जर्नल जो है ये कंप्लीट हो गया है हमारी एग्जाम्पल का। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है, ये देखें, आप लोग स्क्रॉल डाउन करें तो फिर आपका जो है ये टेबल के हेडर्स जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। इसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो हमारा जो हेडिंग्स के नीचे जो हमारा जो रो है उस पर आपने आ जाना है, और आपने जाना है व्यू पे, व्यू में जाके फ्री स्पेस को, और फ्री स्पेस में आपने इसको क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया। इस तरह देखें आपका ये जो है हेडिंग्स अब वो आपको दिखाई दे रही हैं, ये गायब नहीं हो रही। ठीक है, और टोटल अब लोग अगर इसका आप करना चाहें तो वो भी एक टेबल की खूबसूरती ये है कि आप टोटल इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो होगा। वो आपने क्या करना है कि आपने डिज़ाइन में जाना है, ये टोटल रो का जो आपको फील्ड ये बॉक्स नज़र आ रहा है इसको आपने चेक लगा लेना है,
और ये आपका जो है क्रेडिट का टोटल क्रिएट हो गया। यहाँ आपने आके डेबिट वाले को भी इस तरह ड्रॉप डाउन में आके आपने इसका सम कर लेना है। ये देखें 840 हो गया, राइट। ये अगर अब आप इसके बाद जो है आप लोग एंट्रीज जो हैं वो पॉसिबल नहीं होती टोटल के बाद। उसको आपने क्या करना होता है कि टोटल वाले जो इस सेल में आके आपने कंट्रोल एंड प्लस को क्लिक करना है। तो इस तरह आपको इस तरह मैनुअली आपको जो है ना इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो आप लोग जैसी भी आपकी प्रेफरेंस हो कि आप अभी टोटल ना क्रिएट करें तो इसको आप अनचेक कर सकते हैं, या तो अगर आप लोग इस तरह कंट्रोल प्लस करके आप लोग एक एक रो ऐड कर सकते हैं तो वो वेल एंड गुड, तो आप लोग उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने जो है विद इन एनी सेल इस टेबल में आपने आ जाना है। इसमें डिज़ाइन टैब ओपन हो जाता है, ठीक है। डिज़ाइन टैब में आके आपने यहाँ टेबल की फील्ड नज़र आ रही होगी टेबल नेम में, इसमें आपने इसको जनरल जर्नल नेम दे देना है विदाउट एनी स्पेस, क्योंकि आपने विद स्पेस अगर दिया तो ये देखें आप ये एरर वो देता है, ठीक है। तो आपने इसको जो है विदाउट एनी स्पेस जो है अपना नेम दे देना है जर्नल का टेबल का, ठीक है। एंड देन आपने इस इंसर्ट टैब में आके पिवट टेबल को क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखें जर्नल का इसने टेबल सेलेक्ट कर लिया है। आपने ओके प्रेस करना है तो इस तरह एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी। ये पिवट टेबल की सेटिंग है। और यहाँ आपको कुछ चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं राइट साइड पे। इस वन बाय वन आपने इन सब को क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह हमारा कुछ इस तरीके से टेबल क्रिएट हो गया है, लेकिन ये अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको हमने ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपने डिज़ाइन टैब में जाना है। यहाँ आपको रिपोर्ट लेआउट का नज़र आ रहा होगा, ये आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से शो इन टेबुलर फॉर्म इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है। अभी भी ये ऑर्गेनाइज नहीं है, इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये अकाउंट का जो है कॉलम वो डेट से पहले चाहिए, तो इसको आपने मैनुअली इस तरह इसको अकाउंट को ऊपर ले आना है डेट से, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि मज़ीद इसको हमने जो है इसको ऑर्गेनाइज करना है कि हमारा डाटा ज़रा सही लगे। अभी कुछ समझ नहीं आ रही इस टेबल में, तो उसके लिए क्या करना है, अकाउंट वाले रो को छोड़ के आपने डेट वाले पे आना है और फील्ड सेटिंग्स में आके आपने इसमें नन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अकाउंट वाले को आपने ऑटोमेटिक ही रहने देना है, इसको आपने नन नहीं करना, ठीक है। डेट वाला हमारा हो गया। डिस्क्रिप्शन वाले को हमने इसी तरह आगे फील्ड सेटिंग्स में नन कर लेना है। एंड हमने अपने रेफरेंस वाले को भी आके नन कर लेना है, राइट, ठीक हो गया। और अब आप देख रहे होंगे कि इसके कैश टोटल के नीचे कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर रोल के नीचे एंटरटेनमेंट आ रहा है। इसको फर्दर जो है बेटर प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने जाना है अकाउंट्स के टैब में, यहाँ रोज़ में अकाउंट्स के इसको ड्रॉप डाउन को आपने करके फील्ड सेटिंग में जाना है। एंड लेआउट एंड प्रिंट में जाके आपने इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम लेबल इसको चेक लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये स्पेसिंग आ गई है इसके नीचे, राइट। अब इसको हम थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं डेबिट का, और ये हमारा क्रेडिट आ जाएगा। इसका ये एरर इसलिए दे रहा है कि आपने इस पर स्पेस करके फिर करना है, ठीक है। और इसको हम क्रेडिट कर लेते हैं, इसको भी स्पेस देना है, फिर ये ओके करना है इसको, ठीक हो गया। इसकी थोड़ी हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं और इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे और हम सेपरेटर्स कर लेते हैं, राइट, ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन को थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं और इसको हम अपना लेजर की हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर, और बोल्ड करके इसका साइज एक्सपैंड कर दें, राइट, ठीक है। इसी तरह हम इधर भी इसको अपना नेम दे देते हैं लेजर का, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है
कि Alt+WVG आपने अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है और ये ग्रिड लाइंस यहाँ से आपकी हट जाएंगी। तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि ये ज़रा दिखने में अच्छा लगता है, तो आपने ग्रिड लाइंस हटा दी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि किसी भी सेल में आपने आना है और राइट क्लिक कर लेना है टेबल की। यहाँ आपने जो है आपने आ जाना है पिवट टेबल ऑप्शंस पे और आपने ऑटो कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, इसको आपने जो है अनचेक कर लेना है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। ठीक है, तो हम लोग को क्या होगा कि अपडेट करेंगे तो वो ऑटो आपके जो कॉलम की विड्थ है वो कर लेता है, तो उसको हमने अनचेक कर लेना है, राइट। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा एक स्टेप आ रहा है वो ये है कि आपने आना है यहाँ एनालाइज पे। ठीक है, यहाँ आपको फील्ड एंड आइटम सेट्स इस पर आपने क्लिक कर लेना है और कैलकुलेटेड फील्ड पे आपने आके यहाँ आपने एक बैलेंस अपने नेम में लिख लेना है। ठीक है, और इधर हमने करना है डेबिट माइनस क्रेडिट और ऐड करके आपने ओके कर लेना है। इस तरह उसने आपका एक सम ऑफ बैलेंस ये आपका उसने कैलकुलेट कर लिया है। ये हमारे अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होंगे ये उसका है, राइट। इसको आप आके यहाँ बैलेंस कर दें और स्पेस करके ओके कर दें। ठीक है, ये हमारा बैलेंस का फील्ड वो एक कॉलम बन गया। ठीक है, अब हमने जो है लास्ट स्टेप क्या करना है वो ये कि आपने आना है एनालाइज पे और यहाँ इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करना है। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करके आपने अकाउंट पे चेक लगा लेना है और ये आपके देखें इस तरह उसने डिफरेंट हमारे लिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरीज बना ली हैं। हम इंडिविजुअल लेजर्स को इस तरह हम लोग अब सिलेक्ट करके और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसको व्यू कर सकते हैं। और ऑल को व्यू करने के लिए आप इसको प्रेस करेंगे, इसका आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। वो इस तरह की देखें आपके डिफरेंट कलर्स आप लोग सेलेक्ट करना चाहें तो इस तरह हो सकता है। अब फाइनल स्टेप हमने क्या करना है कि आप लोगों ने जो है एक और एंट्री कर लेनी है अपने जर्नल में। वो हम लोग एक एंट्री फाइनल कर लेते हैं, 2 कॉलम इस तरह क्रिएट करके। एक एंट्री लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग 20 जनवरी की एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, और एक एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हम लोग जो है ये एंटर कर लेते हैं। ठीक है, और कैश पेड एंड पेमेंट वाउचर 003 इसको कर लेते हैं और 10,000 की एक एंट्री हम लोग कर लेते हैं, राइट, डेबिट एंट्री। और क्रेडिट एंट्री भी इसी तरह हम लोग कैश में कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पेड। ठीक है, पेमेंट वाउचर आ गया आपका और 10,000 हमने क्रेडिट कर ली कैश, राइट। अब आप देख रहे होंगे कि आपके लेजर्स अभी तक इसमें अपडेट नहीं हुए। ठीक है, ये आपको अभी भी ये देखें लास्ट एंट्री कैश आपको इतनी बता रही है और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो है आपको सिर्फ 40,000 बता रहा है, 10,000 नहीं बता रहा। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, डाटा में आके आपने रिफ्रेश ऑल पे आके रिफ्रेश ऑल को क्लिक करना है। ये देखें आपकी 10,000 की एंट्री यहाँ भी आ गई और आपकी कैश में भी 10,000 की एंट्री आ गई। सो इस तरह आप लोग अपने हर लेजर को और हर एंट्री को आप लोग अपडेट कर सकते हैं और अपने अकाउंटिंग लेजर्स को मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि आप लोग एक्सेल पे कैसे एक फुली ऑटोमेटेड लेजर बुक मेंटेन कर सकते हैं और जिस बिज़नेस के बहुत सारे कस्टमर्स हों या सप्लायर्स हों और उनकी लेजर बुक मेंटेन करनी हो तो उनके लिए बहुत ही ये यूज़फुल होने लगा है। आप लोग इस तरह देखें, इस तरह सिंपली बाय 1 क्लिक आप लोग उस लेजर को व्यू कर सकते हैं। एंड अगर बहुत सारे लेजर हैं तो आप इंडेक्स पेज पे वापस इस तरह नेविगेट कर सकते हैं। और हम लोग आज फार्मूलाज भी इसमें सीखेंगे कि इनपुट कैसे करने हैं आप लोगों ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राइट जी, सो स्टार्ट करते हैं। इस तरह कुछ दिखेगा हमारा लेजर और ये इंडेक्स पेज है और ये मेन लेजर है। ठीक हो गया, तो आ जाते हैं अपने लेजर पे पहले और यहाँ हम डेट की एंट्री कर लेते हैं।
तो डेट जो है, एक हमारे पास डेट का इधर कॉलम है, पर्टिकुलर्स हैं, यहाँ हम डिटेल लिखेंगे। डेबिट का कॉलम क्रेडिट का, ये डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होगा, और ये बैलेंस का हमारा फिगर आ जाएगा इधर। ठीक है, तो हम डेट की एंट्री कर लेते हैं। इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल और ये कॉमा, तो इसको प्रेस कर लें तो आपकी डेट करंट बता देता है वो। इसकी फॉर्मेट, इसको करने के लिए कंट्रोल 1 कर लेंगे हम और अपना डिज़ायर्ड फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, डेट आ गई। ये हम बना रहे हैं डेटर्स लेजर। तो डेटर लेजर में जो है हम सेल जब करते हैं तो जो एंट्री होती है वो डेटर लेजर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमें पैसे ओ कर रहा है, ये हमारा कर्जदार है। ठीक है, और क्रेडिट जो हो जाता है वो सेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर्स में लिख लेते हैं बिल नंबर, लेट्स सपोज हम बिल नंबर 10 लिख लेते हैं। ठीक हो गया, और 50,000 अमाउंट हम लिख लेते हैं, हमने सेल की है तो 50,000 ये हमें जो है ओ कर रहा है, हमारा कर्जदार है। बैलेंस में आ जाएं तो यहाँ हम फार्मूला इधर दे देंगे। तो फार्मूला इस तरह होगा कि इज इक्वल टू डेबिट माइनस क्रेडिट। ठीक है, तो ये देखिए 50,000 हमारा बैलेंस आ गया। और सेकंड सेल जो सेकंड रो में हम आ जाएंगे तो यहाँ हम जो फार्मूला देंगे वो कुछ इस तरह होगा कि इज इक्वल टू बैलेंस प्लस डेबिट और माइनस क्रेडिट। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे सेकंड वाले फार्मूला को और इधर ड्रैग करके अपने एंड तक ले जाएंगे लेजर में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम एक एंट्री कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम 12 फेब की एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, और कैश रिसीव होगी हमें। ठीक है, डेटर ने हमें पेमेंट कर दी तो क्रेडिट जो होगा डेटर लेजर हो जाता है और डेबिट जो है वो कैश हो जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट हमारा डेटर लेजर 10,000 से हम कर लेते हैं। ठीक है, 40,000 देके यहाँ हमारा बैलेंस आ गया। यहाँ हम इजी आसानी के लिए जो है डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है वो दिखाने के लिए एक फार्मूला लगा लेते हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट। ठीक है, और हम ये कर लेते हैं कि ये जो बैलेंस है अगर ये लेस देन 0 है, ठीक है, तो फिर हमारा ये इन्वर्टेड कॉमा करके क्रेडिट हम कर लेते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, अदरवाइज जो है वो डेबिट बैलेंस। ठीक हो गया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा ये। और देखें इसने हमें ये डेबिट बैलेंस बता रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग डाउन आप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये सारे सेल्स में आ गया। ठीक है, अब अभी हमें ये बता रहा है कि ये 40,000 जो हमारा ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ये हमें पैसे कर्जदार है, हमारा ओ कर रहा है हमें ये पैसे। 15 फेब की एक एंट्री कर लेते हैं हम, कैश रिसीव फर्दर कर लेते हैं हम, और इस दफ़ा हम कोई 60,000 की कैश रिसीव कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो इसने हमें ये एक तरह से यहाँ देखें अब क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये नेगेटिव में आ गया। इसने हमें एडवांस में पैसे दे दिए हैं, यानी कि इसने हमें एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं, तो इसीलिए हमें अब ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, ये डेटर लेजर हमारा, और ये ऑटो खुद ब खुद यहाँ ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप इसको अगर सेल करेंगे 1 लाख की, ठीक है, तो ये देखें डेबिट बैलेंस दोबारा से आपका 80,000 हो गया, वो यहाँ चेंज हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक हो गया, इधर हम अपने जो डेटर है इसका नेम दे देते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट, और नीचे भी दे देते हैं इधर हम, और ये बहुत ज़रूरी है नीचे देना क्योंकि ये अभी आगे आप देखेंगे कि कैसे हमें ये यहाँ के ये हेल्पफुल होगा यहाँ लिखना। ठीक है, अच्छा अब हम इसको जो है सेकंड लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं, मूव और कॉपी करके, मूव टू एंड और क्रिएट अ कॉपी। ठीक है, इसको हम आर्सेनल का नेम दे देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ भी हम नेम चेंज कर लेते हैं, और यहाँ हम जो है इधर एंट्रीज हम कर लेते हैं, एक हम 10,000, ठीक है, और 5,000 एंड 5,000। ठीक है, इसको हटा देते हैं। सही, अब ये हमारा बैलेंस 0 हो चुका है यहाँ। ठीक हो गया, तो इस तरह आप लोग और भी लेजर्स इस तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आगे और लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ लेजर्स आपके यहाँ जो हैं आ जाएंगे। और अब हम आ जाते हैं अपने इंडेक्स पेज पे, यहाँ हम अपना सीक्वेंस से
अपने नेम्स लिख लेते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड पहला और आर्सेनल सेकंड। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में आके फर्स्ट सेल में आके आपने यहाँ राइट क्लिक कर लेना है। ठीक है, और ये हाइपर लिंक का आपको यहाँ इधर क्लिक कर लेना है, फिर आना है यहाँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, यहाँ आगे आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। ये इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा इसका। आप इसकी अंडरलाइन ये हटा के इसको बोल्ड करके और अपना ब्लैक फॉन्ट कलर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह जब हम इसको नेविगेट करेंगे, देखें यहाँ आप इस तरह हैंड का आ जाता है, कर्सर चेंज हो जाता है। तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखें आप ऑटोमेटिकली वहाँ जंप कर जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह आर्सेनल को भी हम कर लेते हैं हाइपर लिंक करके और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में आर्सेनल। ये जितने आप लेजर्स नीचे क्रिएट करते जाएंगे ये एक्सपेंड होता जाएगा। तो यहाँ हम आर्सेनल को भी ओके कर लेते हैं। ठीक है, इधर इसकी अंडरलाइन हटा के बोल्ड करके और ब्लैक कलर कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरह हम आर्सेनल पे ऑटोमेटिकली जंप कर रहे हैं। अब जब बहुत ज़्यादा लेजर्स क्रिएट हो जाएंगे तो इंडेक्स का जो ये नीचे आपको जो टैब है ये नज़र नहीं आएगा। तो उसमें आपको जो है जंप करने के लिए क्या करना है कि यहाँ हम एक इंडेक्स लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको दोबारा से मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। आपने यहाँ इंडेक्स के लिए एक स्पेस बना देनी है। ठीक है, यहाँ लिख लें या जहाँ भी आपको यहाँ इजी हो यहाँ लिख दें। यहाँ हमने लिख दिया है टॉप पे। ठीक है, तो यहाँ लिख के इधर इंडेक्स पे आपने राइट क्लिक कर लेना है। हाइपरलिंक पे जाके वही प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में यहाँ जाके आपने इंडेक्स पे क्लिक करके ओके कर लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से उसका भी कलर चेंज हो गया। आपने अंडरलाइन हटा के बोल्ड करके और इसको ब्लैक कर लें और इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये देखें आप इंडेक्स पे जब जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है आपको इंडेक्स पेज पे ले आएगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग फर्स्ट लेजर में ये करके तो उधर से आप लोग उन लेजर्स को जो है मूव एंड कॉपी कर लें और क्रिएट अ कॉपी करके तो वो फिर खुद ब खुद जो है इंडेक्स पेज इंडेक्स का जो ये है वो नेक्स्ट लेजर्स में कॉपी होता जाएगा। तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। Hello viewers, welcome back to the channel Learn Accounting. Today we will learn how we can prepare such an amazing and useful customers aging report in Microsoft Excel simply by following few easy steps, and it's going to be extremely useful for you in your workplace. Before starting, the procedure used in this video is the same for aging analysis for stock, aging analysis for suppliers, and aging analysis for customers. We will use customer data, so we are preparing customers aging report. So we have customers balance report here. All the customer sales data is in here. This is kind of a raw data from which we are going to prepare our customers aging report. In this raw data we have customer name, invoice number, invoice date, and invoice amount columns. So we need to do some working on this raw data to prepare our aging analysis. So what we will do, we will add here 3 helping columns after invoice date, and in the first column we will find out our due date. Obviously we cannot prepare aging analysis if we don't know the due date of invoices. So for the sake of understanding, we will assume that in 30 days the invoices will become due. So to find out the due date, we will simply do this formula is equal to invoice date and plus 30. Okay, this will give us 31st January 2024. This will give us our due date from the date of our invoice. We simply drag it down, and here we have due date for all our invoices, right? Now in the next column we will have to find out overdue days. Overdue days, right? Overdue days, what that means is, it means that for how many days that each invoice has become due. Okay, so for that the formula will be is equal to today and
both parentheses minus due date cell. Okay, so this is giving us result in like this, but this is not correct. We have to correct it. Go to number format drop down menu and select general. Okay, so now we have 397. This means that this invoice has been overdue for 397 days, and simply drag it down. So now we have overdue days for all our invoices. If we come down here, we can see that the number of days is in minus. As we know, the number of days can never be in minus. So why is it giving us a result in minus? It's giving us a result in minus because today's date is 3rd March 2025, but the due date is 11 March 25. It hasn't come yet, so that's why it's giving us result in minus. As you can see, today is 3rd March 25 and the due date is also 3rd March 25, so it's giving us overdue days in 0. So to resolve this issue, we have to modify this formula. To do this, we will simply come here and modify it. If and today minus due date is less than 0, then 0, right? Otherwise, today both brackets minus the same due date cell. Okay, F4, the due date, and bracket close. Right, now simply drag it down. You can now see it's giving result in 0. So this is our desired result. Now we will add categories of aging. You might have studied those categories. These are usually very common categories of aging. So we will write down those categories here. First 0, then 1, then 31, then 61, then 91, and finally 121. Okay, so here we will write our categories of aging. Not due yet, 1 to 30 days, 31 to 60 days, 61 to 90 days, 91 to 120 days, and above 120 days. Right, so these are our categories of aging. This is how you present your report to your boss, by presenting your data in these categories. So we will come here and now we will add our last column, and that will be status of invoice. Simply expand it. Okay, so for status of invoice, what we will do is we will connect our overdue days with all these categories here. And how are we going to do this? For status of invoice formula, that will be VLOOKUP, right, overdue days. Then we have to select this range, all of it, and then number 2 we will select. Second column, we need result from this second column, and finally true, we need approximate match. Okay, right, so this is giving us result above 120 days. Right, now we have to, before dragging it down, make sure to put these dollar signs here to lock this range of the table that we made. Right, so now you have to drag and drop. Here we have our status of all our invoices. So now for our final step, we need to organize this data into a presentable form, into a sort of a report format for our boss. So for that, we will go to Insert tab here and select Pivot Table and press OK. Right, so we will come down here to another sheet, and here you can see all the pivot table settings on the right side. We will select our desired settings here and drag and drop amount in value field.
right? And status of invoice in column field like this, and customer name in row field. So here we have it. Here we have our customer aging analysis report from our raw data that we have prepared for our boss. You can now simply take the print out or organize it the way you want. As we will organize it here, we need this due date, not due yet, before our 1 to 30 days column, right? So we have dragged and dropped it here. So not due yet, 1 to 30 days, 31 to 60 days, 61 to 90 days, 91 to 120 days, and above 120 days. So we have our customers aging analysis report. So if you found this video helpful, kindly like, share, and subscribe to our channel. Thank you so much. Hello viewers, welcome back to the channel. So today we will learn about the two biggest mistakes that most pivot table users make. Number one is not taking advantage of auto refresh. The biggest problem with pivot tables is that you might report outdated data because you forget to refresh your pivot tables. Now there is a setting that automatically refreshes your pivot tables every time you open the file. Let me show you where that is. So over here in Excel we have sales data here. I'm just going to go ahead and insert a pivot table on a new worksheet. Press OK. So here we have pivot table fields. Let's just select in some fields customer name and amount, right? So that setting is right here. Right click it, right mouse click, go to pivot table options, data, and refresh data when opening the file, and press OK, right? So it has been updated, but for that we have to enter another data. We can add a row here and add in date 21st April, Umbrella Corp, 50 units sold for $1,000, and David Brown and Phoenix, right? So here you can see the total has changed. It's 27,250 and 1100, right? But when you go to your pivot table, it's still showing 26,250. Okay, so now close the file, save, and open it again. And now when you open the file, you can see that the total has automatically changed, right? So it automatically refreshes. So that makes sure that your pivot table refreshes every time you open the file. So if someone in your office go ahead and add data to this sales data here, when you open the file, this pivot table is going to refresh automatically. By the way, if you refresh your pivot tables and new data doesn't show up, it's likely because you aren't using Excel tables as your source. Now that's another common mistake that people make. When you could what you could do to make sure that every time everything matches is to add validation checks to make sure that your pivot table data matches your source data. So the next mistake is not using slicers to filter multiple pivot tables. If you're familiar with pivot tables, you know that slicers are a great way to add interactivity to your reports and filter them. We learned how to add slicers to our tables in our last video. If you're not familiar with slicers, here's how you can quickly create one. So in this pivot table, we are summarizing sales amount by customer name, and let's say I want to add a filter for sales representative. I'm just going to right mouse click on sales representative and then click on add as slicer, right? So currently this slicer is connected to this pivot table. You can see it's updating whenever I select different sales representatives, right? Let's just bring it over here. But the second table over here is not being filtered with this slicer. Let's say I want it to be filtered. I want to connect it to this slicer. All I have to do is click on this second pivot table, go to pivot table analyze, right, and filter connections. There we can see our slicer. This is our slicer. Place a check mark here and then OK. Now when you select your different sales representatives, see both of the pivot tables are being filtered. Now the second
pivot table is also connected to this slicer. Okay, so with one slicer you can filter multiple pivot tables. Now one thing we can do is get rid of these row labels and get proper labels here. So I'm going to go to design, right, go to design and report layout and show in tabular form, and repeat this for this table as well, show in tabular form. Right, if you found this video helpful, hit subscribe, like and share, and stay tuned for more Excel tutorials. Thank you. What if your trial balance updated itself every time you add a transaction? Welcome to Learn Accounting, and today you'll discover how to build a fully refreshable trial balance, general journal and accounting ledgers in Excel using only tables and pivot table. Stick around because by the end you'll have a template that instantly balances debits and credits with a single click. So let's start. Here we'll be needing a blank spreadsheet, and here I have a few transactions to pass on our general journal. These are journal entries which we will be passing for our general journal, and for general journal we need to write down our headers, date, account and description, and debit, and lastly it's credit. Okay, and we will arrange these, and I will expand these columns again, description and our debit and credit, right, and we will give it a heading here. We will give it a heading here, general journal, right. We will increase the size of the font. You can format it, give it any color. We will give it a blue, right. So the next step is you need to create a table, and for that we will select our headers here and go to insert and click on this table and check this box, my table has headers, and here you have your table with all your columns, right. So the first entry we will be doing is 1st December 2024. Here started business with a capital in cash 8,70,000 and at bank 13,30,000. so for that we will add our date, 12/1/2024, right. We will go, we will click Ctrl N1 on our keyboard and select our favorite date format, 1st December 2024. Okay, so the first entry will be cash account, and started business with capital, right, and we will debit 8,70,000. And the next debit entry will be bank, same, started business with capital, and amount is 13,30,000, right. And the third entry will be, the credit entry will be capital account, same description, and the total you can see here is 22 lakh, right. So 22 lakh will be our total. Okay, we can change, we can put separators here on debits and also on credits. Right. Now the next entry is of 3rd December 2024. Bought television sets from Amin and Co on credit. So date will be 3rd December,
and we have bought television sets, so purchases will be debited, and description: purchased television sets on credit. Right, how much is the amount? It's 22 lakh. This will be our debit entry, and the credit entry will be on credit, so there will be a creditor, a mean, and goal. Payable. Need to expand this a bit. Same description, and 22 lakh will be credited. Okay, now the next entry is also of 3rd December, and this is paid to Fast Motors for purchase of delivery van through check. So delivery van will be our asset, and 3rd December delivery van will be debited. Purchase delivery van from Fast Motors. Amount is 5,40,000, and credited will be bank through check. Payment was through check, so bank will be credited. Right, 5,40,000. Right, 4th December, our next entry is televisions sold to Ahmed Brothers on credit. So we have sold televisions, and this is on credit, so Ahmed Brothers will be our debtors. Ahmed Brothers receivables. Right, and sold television on credit. How much is the amount? It's 18,80,000, and credited will be sales, because this is our, we have sold television sets, so this is credit sales. Right, 1880. Done. Okay, so the next entry is 8th December, and this is for paid shops rent in advance for 6 months to June 2025 to Mrs. Ali through check. This is also paid through check, so advance rent, we have paid rent in advance. Right, so advance rent will be debited 8th December, and advance rent, this will be our current asset, and description is paid rent in advance. Okay, amount is 6,80,000, and we have paid it through bank, so bank will be credited, pay rent in advance, and 6,80,000 will be credited. Right, so the next entry is payment received from Ahmed Brothers and deposited in bank, 13,40,000. So Ahmed Brothers is our debtor. We sold television sets to Ahmed Brothers. Now we have received 13,40,000 from Ahmed Brothers, and date is 11th December. So bank will be debited because we have received amount, cash received from Ahmed Brothers. Amount is 13,40,000, and our debtors will be Ahmed Brothers. Receivable will be credited. It will become less by this amount. Okay,
So the next entry is of 12th December, paid check to Amin and Co. Amin and Co. We bought televisions from Amin and Co. on credit. They are our suppliers, our creditors. So Amin and Co. we have paid check, paid through bank. So 12th December, our creditors will be debited, Amin and Co. Right, paid to Amin and Co. How much amount is paid? 784. And credited will be bank. Will be credited, paid to Amin and Co. and 784,000. Okay, so the next entry is 18th December 24, paid carriage by cash on purchases, 38,000. Right, 18th December, carriage inward will be debited, paid carriage on purchases, amount is 38,000. And cash will be credited, 38,000. Right, so next entry on 19th December 24 is defected televisions returned by Ahmed Brothers. Ahmed Brothers is our debtor, and they returned defected television sets. So date is 19th December. So we sold them, and now we have to reverse the entry. Sales return will be debited, sales return account, television sets returned by Ahmed Brothers. Right, how much amount? 2,20,000. So this will be debited, and Ahmed Brothers are debtors. We will reduce it by the same amount. Their account will be credited. Right. So the next entry on 22nd December 24 is bought LCD televisions on credit from Amin Co. of 12,30,000. Right. So purchases will be so on 22nd December we will debit purchases. Right, we bought LCD from bought LCD on credit. How much amount? 12,30,000. So purchases will be debited by this amount, and our credit, we bought it on credit, so Amin and Co will be credited. Right. Okay. Second last entry is 28th December 24, sold LCD television to Ahmed Brother on credit. So we will make another sale to Ahmed Brothers on 28th December, and we sold it on credit, so Ahmed Brothers will be debited, on credit. Amount is 8,10,000. And credited will be sales.
8,10,000 will be credited. Last entry is 30th December. The owner withdraws one television set for his personal use. So this is a drawing by the owner of the business. 25,000 worth of one television set is withdrawn. So what we will do is we will debit drawings account by that amount, one television set for personal use. Right, amount is 25,000, and purchases will be credited. Purchases account, because purchases are getting less. So this is our journal entries. These are our journal entries, and you can add a total figure here simply by clicking on any row or cell within the table. Go to design and check this box of total row, right? So here we have a sum for credit. Here you can select from drop down menu sum for debit as well, 1197. Here you have totals for both debit and credit. Okay, and one last thing we will want to do here is to, whenever we scroll down, you see it, the general and our headers, they disappear. We can freeze these panes by going to view and freeze panes and click on freeze panes. So here you can see whenever you scroll down, you will still be able to navigate your headers, right? So we will change the name of the spreadsheet and name it general journal, right? We will name it general journal. So the next step we will be doing is go to the design tab and name your table general journal without any space. Okay, so here all the magic starts now. Go to insert tab, click on pivot table. Okay, it has selected this general journal here, and now we need to create our pivot table in our new sheet, new worksheet. So click OK. Here it has created our ledgers. We need to select all our pivot table fields here, debit and credit, right? So now you can see it's disorganized. We need to organize it. To organize it, go to design and report layout and click on show in tabular form. Okay, the next thing is we need this account before our date, so manually just drop it above date. Here you can see account and then date, description, and sum of debits and sum of credits, right? It's still a bit disorganized. We need to organize it better for presentation purposes. For better presentation, go to date here, field settings, and click select none here and press OK, right? And do it for description as well. Go to field settings and none it. Do not change for account, just leave it as automatic. Okay, so to organize it a bit better, go to account, drop down menu, field setting, layout and prints, and click on insert blank line after each item label, right? So here we have a blank line after each item label, right? We can name it here, this is our ledger, so expand it and we can format it, give it a color blue and
white font. Okay, so the next step is we need a sum of balance column here. So for that we will go to analyze, field items and sets, click on calculator field and name it balance, right, and click here debit minus credit, right, and select OK. And here we have our sum of balance column, right. This will show our balance for each our ledger here. We can format it, you can adjust it, like extend it, and here we have our ledger balance, right. So one thing we can do is we can select all these three and put on separators here, and we can edit the name of these headers. Okay, credit space and then OK, and here we have balance space and OK, right. Okay, so in real life you will have hundreds of accounts, ledger accounts. So to solve that problem, we can add, Excel provides an option. Go to analyze, insert slicer, and we need a slicer for our accounts. So check this box, account, and press OK. Here we have our slicer for all our accounts: Advance Rent, Ahmed Brothers, Amin and Co, right, bank. One thing we can do here is go to this cell and plus and select this. Okay, we can expand it a bit and bold it and italic, and here we have, you can see whenever you navigate, we have a heading for our different accounts and ledgers, right. If you want your the account names to be repeated here, go to account, field settings, layout and print, and repeat item labels. Here you have repeated item labels. We will name this our spreadsheet as ledger, right, and we need to copy it, and now we need to copy it. For the fun part, create a copy, right, here it's created. Now we are creating our trial balance. For that we don't need this slicer, so remove account. Now it's removed. Okay, now we can create our trial balance through just one click. Remove this date and description, and voila, here we have it. Remove this, and this is our trial balance. You can see each of our account here, and we can now update this and name it trial balance. Name it trial balance and just format it, make the color here, and here you have your trial balance, debits and credit, and your balance column. Okay, now as we have created this trial balance, let's add another transaction, one last transaction, to see if this trial balance updates or not. So let's come down here to general ledger and add two more rows. Let's suppose on the 30th of December we repeat this transaction of carriage invoice
and cash paid 10,000 for the sake of simplicity, 10,000 carriage inwards expense, and 10,000 cash credit. Right, so as you can see, totals have been updated here, but the ledger, it's still not updated, as well as the trial balance 11,947,000 and 11,957,000. To update it, let's refresh it. Go to data and press refresh all. Here you have it. Your cash has also been updated, and carriage inwards, which was 38,000 before, is also updated here, 48,000. So you can update your trial balance by entering further transactions, and just by one click, by clicking refresh, it gets updated. So thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more accounting and Excel tips. Thank you so much. Ever lost track of your inventory and ended up overstocking, or worse, running out of products just when customers needed them most? Welcome to Learn Accounting Pro Studio, and say goodbye to the chaos. In this video, I'm going to show you how to build a smart, simple, and powerful stock control sheet in Excel, perfect for small businesses, shopkeepers, or anyone tired of manual guesswork. At the end of the video, I will show you how to build this interactive and dynamic dashboard. So let's get into it. So we will start with a blank worksheet, and we will write stock control sheet here. Stock control sheet, and I'm going to merge it till this column I, merge and center. Now we will write down our headings: product, unit price, opening stock, purchases, sales, closing stock, then value of closing stock, value of goods sold, and lastly our reorder status. Okay, now I'm going to format our headings. We will wrap text, center it, centralize it, and I'm going to bold all of our headings. Right, now let's increase the font size a little bit more, and let's increase a little bit more like this. Now we will select all our columns and increase the size. Perfect. And increase the size of the stock control sheet as well. Okay. Now let's select all borders. Now I'm going to do a bit of more formatting. Let's color. I will do this white color and blue, and here we will select this. Right, so now I'm going to write down our product names. This is an electronics business worksheet, so we will write down electronics names. Right, so here we have all the names. Now we will write down unit price. Okay, so here we have unit prices. Now we will write down opening stock. Now we will write purchases. Now we will write down our sales. Now for the closing stock, we will write down the formula is equal to opening stock plus purchases and less sales. And now we will write down our formula.
Here we have all our closing stock for all our products. Now for the value of closing stock, we will write down formula is equal to closing stock multiplied by unit price, and we will write down. And now for the value of goods sold, we will write down formula is equal to sales multiplied by unit price, right? And we will write down, right? Now we will use separators and select this A column and select this column and center. Alright, now let's make Excel alert us when it's time to reorder stock automatically. Here's the formula is equal to if bracket open and this closing stock cell is equal to 0, then quotation marks, if this closing stock cell is less than equal to 20 is our, we are assuming 20 is our reorder level, then reorder quotation mark close and comma, otherwise available, quotation mark close, brackets close. You can see here it's alerting us to reorder because the closing stock is 10 for this product. Now let's drag it down all the way through, and here you can see you have reorder status for all your products. Don't worry, it looks scarier than it is. Let me break it down real quick. Okay, so we're looking at closing stock in cell F3 here. If stock is 0, we just leave the cell blank, right? If stock is 20 or less, it says reorders, so you know it's time to restock. If it is more than 20, it simply says available, meaning you're good. Simple logic. Excel checks your stock and gives you an instant status update. It's like having a mini inventory assistant right in your spreadsheet. To make our sheet more intuitive, let's add conditional formatting. Select all the cells below this reorder status heading. Now go to home and conditional formatting, new rule, format only cells that contain. Go to this drop down menu and select specific text and write here reorder, right? And now go to format, select fill and then select this red color and then OK and OK, right? So here you can see reorder has turned into red. And now you can do this for available as well. Select all the cells, go to conditional formatting, go to manage rules, now new rule, and select format only cells that contain. Now specific text and write available here and go to format, then fill and green color select and then OK, and now apply, right? So here you can see the available is showing green. Now any product needing restocking will stand out as red and any product that is available will stand out as green. Now let's visualize our data. Highlight your data range here, go to insert, pivot table and create a pivot table into a new sheet and select drag product to rows and
closing stock to values like this, right? Okay, now let's do a little bit formatting here. Go to design, report layout, and show in tabular form. This is showing product now, right? This pivot table shows stock levels per product category. For a visual representation, select this pivot table, go to insert, now go to pivot table chart, column, and then OK. Now you have this dynamic chart displaying your inventory status. You can format it color as well, like this, and this is showing you different products. And now you can add data labels here, and now you have your closing stock numbers here on top of the bars. Now we can update the closing stock figure to see if the chart also updates. Go to your stock control sheet, and let's so for example we can update this and make it 200 opening stock. Now we have 160 as closing stock of laptops. Now go back and go to data and refresh all. Now you can see this has updated, it's 160, and laptops here has also updated 160. And that's how you create a professional automated stock control sheet in Excel, complete with real-time stock levels, reorder alerts, and a dashboard you can actually use. If this video helped you, give it a thumbs up so I know to make more like this. And don't forget to subscribe to Learn Accounting Pro Studio for more Excel tips, accounting tutorials, and practical tools for your business. Thanks for watching, keep learning, and I'll see you in the next one. Welcome to Learn Accounting Pro Studio, where we simplify accounting and Excel for professionals and students alike. In today's tutorial, we'll walk through creating an automated invoicing system in Excel that allows you to generate invoices by selecting customers from drop-down, automatically populate their details like this, and calculate totals including taxes, export the invoices as PDF with a single click. This system is perfect for anyone looking to streamline their billing process, so let's get into it. First step is to create an invoice template, which is what we have over here under this invoice tab. And to the side I have this customers tab, which is where we would list all of our customers with their respective details. In this invoice tab, you can see I already have some of the formatting done. So if you want to follow along, you can download this exact same file in the video description for free. Now we can make this invoice dynamic. For example, under this bill to here, we want to have a drop down. So if we select a certain customer, we can have their details. For this, we will make the drop down list by going to data and clicking on this button data validation, and select from this drop down list and click on the source. And for the source, we need to go to our customers tab, continue to select from the first customer all the way to the bottom, control shift and down, enter, and then select OK. So now we have a list like this. You can see we can select our customers from this list. Below it, we want their details, for example their address and so on. We will use index and match functions. Equals to index, hit the tab key. What are we looking here? The return array is what we want as the answer. We want their address number 1, comma,
match, bracket open. The lookup here is the customer, so select D5, cell for customer name, and hit F4 key for $signs. So when you drag this formula down, it's going to remain fixed. Now comma, the lookup array is basically where we can find our customer. We can find it in column B of the customer sheet. This is the column B, and then comma and 0 for exact match. Now close the function with brackets and hit enter. Now drag this formula to the two cells below it for their address, number 2, and their email. Now select the address 2 cell and change the customer C to customer D, because in the D column you can see we have address number 2 line. And now for email, change this customer C to E, because we have in column E their contact, their email ID. So now if you change from this drop down menu, you can see it's also updating. Now if we add a new customer, we can see their details as well. Like for example, we can add Blue Ridge. We have added this 4th customer. Now you can see we can select it's the drop down list is also showing the 4th customer and its details. So now we can work on invoice date. This invoice number will be filled in manually. For the date, we will use is equal to today. Hit enter. This will change whenever we open the Excel file, and we can change the format Control 1. For due date is equal to this invoice date plus 30 or 15, whichever you would like, whichever is applicable to your business. It's given 1st of July 2025. Now let's work on the pricing and taxes. For example, we have product A, quantity 1, unit price 100 USD. In the tax cell, use the formula is equal to this unit price multiplied by quantity and multiplied by tax rate. We can assume 0.18. It's giving 18 USD. For total excluding tax is equal to unit price multiplied by quantity. Hit enter. It's giving 100 USD. So if we change the quantity to 2, it will give us 200 USD, and tax will also update. Now drag this tax and total all the way down. We are getting zeros, which doesn't look very nice. So we are going to remove them by adding an if statement. So for tax, open the function is equal to if, open the bracket, and this quantity D11 is equal to 0, comma, quotation marks, comma, and now close the bracket. Now drag it down, and we are no longer getting the zeros. Now for the total excluding tax, open the function is equal to if, bracket, this quantity is equal to 0, comma, quotation marks, comma, and close the bracket. And now drag it all the way down, and now we are not getting any zeros.
So now for subtotal USD, here is equal to sum bracket enter, and for tax here is equal to sum bracket and all the way and hit enter. Total USD is equal to subtotal plus tax. Now in the bottom we have payment info and comments. These will not be going to change for us, so we will keep them as they are. Now to make the invoice printable, select the whole area which you want to print, leaving a few gaps. Go to page layout, print area, set print area. So this is our print area. Go to margins, select narrow. We can test that by going to Control P. So this is our preview. It's looking very nice and clean. Next up, we will create a button over to the side that will say export to PDF. So when we click it, it's going to export our invoice as a PDF in one click. For this, we need to save this file as a macro enabled workbook. Go to File, Save as, Desktop, and select from this drop down menu Excel macro enabled workbook and save it anywhere. Now head over to Developer tab. If you can't see this tab, just go to any other tab, right click, customize the ribbon, and over on this right side you can see this Developers tab is ticked. If it's unticked for you, you can tick it and press OK. To create this export as PDF button, we are going to write a simple code. And don't worry, if you haven't written a code before, you can follow these easy steps and learn it. Now go to this Developer tab and click on this Visual Basic button. A window like this will open up. We will split screen it so we can work side by side. Now go to Insert and click on Module. Now we want to create what is known as a sub or a sub procedure and name it PDF and two brackets. This sub or sub procedure are a set of instructions or actions that we want to tell Excel to do. Hit enter. Within it, we want to declare our variables, which is essentially telling Excel what kind of data type we want, like a string of text. Now write dim space invoice underscore number space as long. Enter. Dim space name space as spring. Enter. Dim space file underscore path space as spring. Enter. Dim space file name file underscore name space as spring. You can name these anything you want. Now that we have declared our variables, we want to tell Excel exactly where they are located.
So first we have invoice number, invoice underscore number space equals to range bracket open quotation mark, and where is the invoice number? Invoice number is in G4 here. So we will type G4 quotation mark and bracket close, enter, name space equals to range bracket open and quotation mark D5. What is D5? D5 is our customer name. D5 quotation mark close, bracket close, enter, file underscore path equals to, this will be the address where we want our file to be saved, and you can save it anywhere. I have created this invoices folder. Go to its address bar and copy it and simply paste it between the quotation marks, and make sure to put this forward slash sign and enter. Finally, we are just missing the file name, which is going to be a combination of invoice number and customer name. So file underscore name space equals to invoice underscore number space ampersand space quotation mark underscore quotation mark close space ampersand name, hit enter. I put this underscore here to separate invoice number from the name so they don't get glued together. So we have now told Excel VBA where things are located, and the next step is to tell it what to actually do, which is to export as a PDF file. So type active sheet dot export as fixed format space type semicolon equals to XL type PDF comma ignore print areas semicolon equals to false comma file name semicolon equals to file underscore path space ampersand space file underscore name and hit enter. Now we are ready to go. We can run it by pressing on this play button. Now head over to desktop, your invoice folder, and you can find these invoices in PDF with invoice number and customer name. Next up, so we don't have to write this code again and again, we will just create a button inside Excel that we just can press once to export to PDF. Go to Insert under the Developers tab and click on this button. Create a box with the help of mouse. Link it to the PDF macros that we have just created. Click OK. Now right click on the box, edit text,
and rename it export as PDF. Now let's give it a try. Change the customer name from drop down list. We will select Johnson Hardware and change the quantity to 10, and we can add product B, quantity 1, price 150, and click on export as PDF. Now head over to the invoice folder and we can find our invoice Johnson Hardware. You can see everything is looking very nice. And there you have it, a fully automated invoicing system in Excel that saves you time and ensures accuracy. If you found this tutorial helpful, please give it a thumbs up and subscribe to Learn Accounting Pro Studio for more practical accounting and Excel tutorials. Thanks for watching, keep learning, and I'll see you in the next one. Welcome to Learn Accounting Pro Studio, where we simplify accounting and Excel for professionals and students alike. Today let's take a look at 3 ways you can transpose your data in Excel. Method 1 is static, 2 and 3 are dynamic. Let me know in the comments below which method you use. For me, method 3 has been my most used one so far. Here's a simple data set. We have months and the sales values per month. Method number 1 is the static method. So what I'm going to do is to highlight the area that I want to transpose, select all the cells below the headers. Now press Ctrl C. Now go to the area you want to show your resulting data. Right mouse click, paste special. Now put a check mark for transpose. Now click on OK. That's our data arranged. But a downside to this is it's not dynamic. This is static. So if something changes in your vertical table, like for example one like in January, it's not going to pull through in your horizontal table. You can also do this without right clicking on your mouse by selecting your data set, Ctrl C, go to the area where you want to show your resulting data, and on the keyboard press Alt ES and put a check mark on transpose. Now click on OK, and there you have it. Method number 2 is to use the transpose formula. This transpose formula only needs one argument. Is equal to transpose, open parenthesis. Just highlight all the cells that you want to transpose. Now close the parenthesis, hit enter. It doesn't work. It gives this value error. So what I'm going to do is click inside the formula bar. Now hit F9 key to see what's behind it. We can see our months, January, February, and so on here, and we can see our values here, but it can't put all of these results in one cell. And because transpose is an array formula, what we need to do is to highlight the area so that the cells we want the results in before we write the formula. Now for this formula, we will first highlight the area, but the tricky part with this formula is that we are not sure, as we are not able to know unless we count the number of rows in our vertical table where to set our highlighting. So I will just highlight this, go to the formula bar, type in the same formula is equal to transpose, open parenthesis, select the data set, close the parenthesis. Now here's the important part. Don't press enter. Press Ctrl, Shift and enter. Now we see our results in separate cells, which is great, but it gets cut up to here till September.
because I didn't select enough cells before. So what I'm gonna do is to pull this further, it's until here, and pull this further till here, but notice the results is all messed up. That's because I need to go back to the formula bar and click Ctrl Shift and enter again. Now we can see it's corrected. Now because it's a formula, everything I changed here in our vertical table, it's gonna pull through our horizontal table as well, like this. So that's the advantage of using this function. Now let's move on to method number 3, direct references. The aim is to have simple cell references, like I want January here equals to January. Now I want February right next to January. I will pull it through here. But the problem is that I can't pull it forward. It's not moving down, it's moving forward. And I could go through each one and type the formula equals to A4, A5. But that's gonna be super annoying, right? So instead what I'm gonna do is to type the formula in the cell as text. So instead of typing in the equal sign, I'm gonna put A3 here, and then to the next cell I'm gonna put A4, and so on. But I'm not gonna do this manually. I'm gonna use Excel's fill options to help me do that. One other thing I'm gonna do is to add a prefix to this cell over here. I'm gonna use my channels initials, learn accounting, so LA A3 over here and LA B3 over here. So now I'm gonna highlight these and pull these right through over here. Now notice what's happening here. It says LA A14 and LA B14. The number after the initials are moving in the right direction. Press Ctrl H. I'm going to look for LA and I'm going to replace it with an equal sign. Hit replace all button. I get my formulas in there, and they're simple formulas, but it's much faster than going into each cell and typing in the reference to the correct cell, especially if you have a lot of columns and a lot of data. If you found this tutorial helpful, please give it a thumbs up and subscribe to Learn Accounting Pro Studio for more practical accounting and Excel tutorials. Thanks for watching, keep learning, and I'll see you in the next one. Are you tired of manually filling payment vouchers in Excel every month? Welcome to Learn Accounting Pro Studio, and today I'm going to show you a slick, foolproof way to build an automated payment voucher in Excel using VLOOKUP so accurate your boss will wonder if you're a spreadsheet wizard. Let's get into it. First step is to create a list to record the details for each payment voucher. The important columns that we need are payment voucher number, payment date, the recipient of the payment, the payee, item spot, amount for item bought. You can create as many items as you want. I need 5 here. Payment method, reference number or the check number or transaction number, issuer of the payment voucher, approver of the payment voucher, and finally remarks. Now we are going to adjust the width of our columns. Now we need to convert the columns into table. Select all the columns. Go to Insert tab. Click on Table. Check my table as headers box. Click OK, and there you have your table.
Now let's fill in the example of the details. For example, here we have payment voucher number 1001. Date is June 1st, 2025. Pay is Smith and Sons Supplies. Item 1 is office equipment. Item 1 amount is 12,000. Item 2 is machinery. Item 2 amount is 25,000. Payment method is through check, and check number is BA11003394. Payment issuer is Ben. Payment approver is Michael. Remarks is 15% discount. Right? So now we can fill in a few more vouchers. Here you can see we have added a few more vouchers and their details. Now the next step is to go to another spreadsheet and design our payment voucher template. We will type the header of the voucher here, payment voucher, followed by company name and its details. Here we have the header of the payment voucher. Now we will do a bit of formatting. Let's bold all of these and increase the font size. Right. Now based on the columns we have made in our record tab, we will make the template for the details to be auto-filled into our payment voucher. We will type pay name here, payment method, reference number. Now we will create space for the data to be auto-filled. Next, payment voucher number, payment date, we will bold all of these. Now we need payment voucher sequence, payment details, and payment amount. Let's do a bit of formatting. Bold. Let's change the color and like that. Area for total. Total will be shown here. Now remarks. Create area for remarks. We will change the font style to italic and bold it. We will type issued by. Followed by approved by, and finally the recipient. Here we will type issuer, here approver, and here pay. Now we will bold
you have a payment voucher template. Now after designing the template, we will link the template to the record tab here. For that, firstly, we need to select a cell in our payment voucher as the cell reference for the linkage. So on the right hand side of the payment voucher, we will make this cell as the space to populate the payment voucher number, which allows the linkage of corresponding data from the record tab. Type payment voucher number here and 1001 our payment voucher number here. Close it in an outside border here, and in the payment voucher number area of the payment voucher, link it to the box that we have created here. After that, we will use VLOOKUP function and link all our data. For example, when we choose a voucher number, we would like to have the item automatically populated at the payment details column of our payment voucher. For that, type is equal to VLOOKUP, hit the tab key. We will select M4 cell here on the right side as our lookup value. Hit F4 key on the keyboard for $signs, so when we drag this formula down, it won't change the payment voucher number cell. Now comma. Now in the table array, we will put the table name that we have created in our record tab. The table name is table 1, comma. Now since the first item is located in column 4 of the table, we put 4 as the column index number, comma. Then we put false, as we would like to have the exact matching data when we choose certain payment voucher number. Close the parentheses and hit enter, and there you have office equipment as the payment detail. Now drag the formula down. Now we have to manually change the column index number for our rows. We will change it to 6 because in column number 6 here of the record tab, you can see we have item 2. Similarly, 8, 10 and 12 is showing item number 3, 4 and 5. So we will change it to 8, 10 and 12. However, when the column is blank in the record tab, we can see the formula is displaying items as 0. To correct this and make it display as blank when corresponding column is not populated, we will use a combination of if and VLOOKUP functions. We want the result to be displayed as an empty string when the test outcome is 0. So we will modify this formula and type if VLOOKUP is equal to 0, comma, we need them as empty string, and then comma. Now copy this formula over here, paste it over here, hit the parentheses and now enter, and now drag this formula down. Now we have to manually change our column index number eight, 10, 10 and finally 12. Now you can see it's not displaying it as 0 as we have modified our formula. Now for the sequence number on the left side of the payment details, we will copy the formula and paste it here.
and we will modify this last part of the formula as count A. Hit the tab key and we will select the payment details right next to this number sequence C11, column C11, and in the first C11 part hit the F4 key for dollar signs and hit enter. Now drag the formula down and change the column index numbers as 6, 8, 10 and 12. Now let's set up formula for the other space in this payment voucher template. So for the sum of the amount, simply use the function is equal to sum, open parentheses, select the area, close parentheses, hit enter. Right. Now copy the formula from payment details and paste to the amount cell here. Now drag it down to the area we want populated and change the column index number. So the column index number for the amount of item 1 will be this 5th column, and for item 2 it will be 7th column, for item 3 it will be 9, for item 4 it will be 11, and for item 5 it will be 13. So we will modify this and change it to 5. And now we will change it to 7. For item 3, change to 9, 11, and finally for item 5, 13. Add separators, right? Then do the same for other details like pay name, payment method, reference number, and date. We will copy this formula and paste it over here. Now go to the record tab and see pay name is showing in the 3rd column of our record tab. So change the column index number to 3, and there you have your pay name. Similarly, for payment method, copy the formula and change the index number to 14, as in our record tab the column number 14 is for payment method, and copy the formula to reference number and change the column index number to 15 for reference number, and for date copy this formula and change the column index number to 2. If the date is not displayed correctly, then press Ctrl 1, go to date and select your desired date format. Apply the same for remarks and this issuer, approver and payee cells. For remarks, change the column index number to 18.
For issuer, change the column index number to 16. For approver, change it to 17. And for receiver, the pay, change it to 3. Now we can add the spin button beside the payment voucher number. For that, go to Developer tab, then Insert and select this spin button. Now draw it over here, and you can increase the size of this cell by typing Alt-HOH and increase it to 28. Do a bit of formatting, and there you have your spin button. If you can't find your developer tab, go to any other tab, right mouse click, customize the ribbon, and check your developer tab box and then click OK. Now we will link the spin button to the payment voucher number. Right mouse click on the spin button, format control, put 1001 in the minimum value tab and link cell M4 to the cell link tab and click OK. From this spin button, we can choose our desired payment voucher just by one click, as you can see here. This saves our time to populate the payment voucher number whenever we want to generate a certain voucher. Now to make this payment voucher look a bit cleaner, press Alt-WVG on the keyboard to remove the grid lines. And now to select the area that you want printed, select the payment voucher area, go to page layout, press print area, click on set print area, and there you have it, a fully automated payment voucher ready to be printed. If you found this tutorial helpful, please give it a thumbs up and subscribe to Learn Accounting Pro Studio for more practical accounting and Excel tutorials. Thanks for watching, keep learning, and I'll see you in the next one. Hello viewers, welcome to Learn Accounting Pro Studio. आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग इजी स्टेप्स में अपनी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर मल्टीपल ईयर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने सिर्फ फर्स्ट ईयर का डाटा जो है वो इनपुट करना है एंड नेक्स्ट ईयर का डाटा जितने भी मल्टीपल ईयर्स आप लोग क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली खुद ही क्रिएट हो जाएगा। आपको डाटा इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे जो कि बैलेंस शीट भी होती है, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहलाता है, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, हमारे नोट्स टू द प्रोजेक्टेड अकाउंट्स, एंड फाइनली हमारा जो फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल है जिसमें डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होती है वो भी ऑटोमेट करना सीखेंगे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि बैंक्स को रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लोन या लीजिंग के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो बैंक्स मल्टीपल 5 इयर्स या 7 इयर्स की स्टेटमेंट्स आपसे मांगते हैं, तो आज हम ये लोग क्रिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हम लोग एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन कर लेंगे एंड इधर आप लोगों ने आके नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग दे देनी है, देन फिक्स्ड एसेट दैट रिटन डाउन वैल्यू, देन कुछ गैप छोड़ के आपने करंट एसेट्स, स्टॉक एंड स्टोर्स, अकाउंट रिसीवेबल। आप लोग इसमें अपने बिजनेस से रिलेटेड
जितने भी हेड्स हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। एडवांसेस, डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। देन कुछ गैप छोड़ के आप लोगों ने यहाँ राइट करना है टोटल एसेट्स। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, टोटल इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। हमारी एग्जांपल में हम लोग 6% लॉन्ग टर्म लोन यूज कर रहे हैं। करंट लाइबिलिटीज, इसमें भी आप लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी हेड्स हैं वो इनपुट कर सकते हैं। अकाउंट्स पेएबल, accrued expenses payable, and finally total equity and liabilities. Right. नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अपनी हेडिंग्स को हम लोग बोल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना है एंड अलाइनमेंट में आके इंडेंट को आप लोगों ने 2 कर लेना है। इसी तरह आप लोगों ने अपने जितने भी आपके अकाउंट हेड्स हैं F4 की अपने कीबोर्ड में प्रेस कर लेनी है। इन सब की अलाइनमेंट एडजस्ट हो जाएगी। राइट। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अपने ईयर्स हम लोग यहाँ 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 and finally 2031. इसको हम लोग सेंटर कर लेते हैं एंड बोल्ड कर लेते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ Alt H को W करके इसको 1 कर लेना है एंड कीबोर्ड पे F4 की आप लोगों ने इन सब पे अपने कॉलम्स की आपने जो विड्थ है वो ऐसे एडजस्ट कर लेनी है। राइट। अब हम लोग यहाँ करेंसी अपनी लिख लेंगे। हम लोग US डॉलर कर रहे हैं एंड इसको आप लोग यहाँ पेस्ट करें। राइट। इस एरिया को सिलेक्ट करके हम लोग मर्ज एंड सेंटर प्रोजेक्ट की हेडिंग दे देंगे। इसको बोल्ड कर लेंगे एंड इसको हम लोग ब्लू कलर करके फॉन्ट का वाइट कलर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने अपनी हेडिंग दे देनी है मर्ज एंड सेंटर करके। आप लोग कंपनी का नेम यहाँ टाइप कर लें, लर्न अकाउंटिंग प्रो स्टूडियो। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेम दे दें, प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड अपने ईयर्स हम लोग यहाँ इनपुट करेंगे, जून 25 टिल जून 30, 2031। इसको बोल्ड कर लेते हैं। राइट। नेक्स्ट अपने नोट की हेडिंग दे देते हैं एंड यहाँ फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल के लिए नोट का रेफरेंस दे देते हैं जो कि हम नोट 3 बनाएंगे। अब आपने इधर आके अपने एरिया को सिलेक्ट कर लेना है अपने नंबर्स के लिए एंड जितना भी एरिया हो आपने सेपरेटर्स करके नंबर्स के लिए इसको एडजस्ट कर लेना है ना। अपने डेटा के लिए हम लोग यहाँ बॉक्सेस क्रिएट कर लेंगे। आउटसाइड बॉर्डर
इसको आप लोग कॉपी एंड पेस्ट कर लें लाइक दिस, एंड इधर आके आप लोगों ने ऑल्ट एंड प्लस को अपने कीबोर्ड में प्रेस करके ये बॉक्स का एरिया सिलेक्ट कर लेना है। जो भी डाटा हम लोग यहाँ लिखेंगे वो यहाँ सम उसका हो जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट, राइट। टोटल एसेट्स में आप लोगों ने आके इज इक्वल टू दिस फिक्स्ड एसेट प्लस आपके जो करंट एसेट्स का टोटल है उसको कर लेना है। इसमें हम लोग थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं एंड कंट्रोल एंड पेस्ट, राइट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे। इधर भी सेम प्रोसीजर आप लोगों ने फॉलो करना है। हम लोग बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। सम टोटल के लिए आप लोगों ने ऑल्ट एंड प्लस एंड सेलेक्ट योर बॉक्स, कॉपी पेस्ट, राइट। एंड यहाँ टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में आके हम लोगों ने टोटल इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 6% लॉन्ग टर्म लोन प्लस आपके करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल एंड एंटर एंड कॉपी एंड पेस्ट। हमारी बैलेंस शीट यहाँ क्रिएट हो चुकी है। इसका फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं। अब अपने कीबोर्ड में आप लोगों ने Alt V P करके इसका साइज जो है आपने 100% कर लेना है। इस तरह का आपका व्यू क्रिएट हो जाएगा। आप लोग यहाँ भी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लें, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। एंड अपने टोटल्स के लिए हम लोग बॉर्डर्स क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस एंड कॉपी एंड पेस्ट। अब बैलेंस शीट को चेक करने के लिए हमारी डेबिट एंड क्रेडिट साइड अगर मैच ना हो रही हो तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ माइनस टोटल एसेट्स, यहाँ आप लोग एक चेक करने के लिए एक एरिया क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यहाँ आपका 0 आना चाहिए। एंड यहाँ हम लोग सब पे पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अपने जो एरियाज हैं ऑल्ट एज को W करके आपने इसको 12 कर लेना है। जितना भी आपका डिज़ायर्ड है इसकी विड्थ हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। राइट। अब हम न्यू शीट पे आ जाएंगे। यहाँ हम लोगों ने अपना प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करना है। हम लोग इधर हेडिंग दे देंगे। हम लोग इधर टैब अपना प्रॉफिट एंड लॉस का क्रिएट कर लेंगे एंड थोड़ी गैप छोड़ के आप लोगों ने इधर इनकम, कमीशन इनकम या जो भी आपने अपने कंपनी से रिलेटेड जो हेड्स बनाए हैं इनकम के वो यहाँ आप लोग टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, यहाँ जितने भी आपके एक्सपेंसेस के हेड्स हैं वो आप लोगों ने टाइप कर लेने हैं। राइट। नेक्स्ट हेडिंग ऑपरेटिंग इनकम, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम फॉर द ईयर की हेडिंग आ जाएगी। थोड़ी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ भी अपना हेडर्स को बोल्ड कर लेते हैं। कंट्रोल एंड 1 प्रेस करके हम लोग इंडेंट इसकी शुरू कर लेते हैं।
एंड F4 प्रेस करके अपने रिमेनिंग की भी हम लोग इंडेंट चेंज कर देते हैं। राइट, नेक्स्ट अप हम लोग यहाँ ईयर्स को टाइपिंग नहीं करेंगे। कीबोर्ड पे सिंपली आपने इक्वल पे जाके बैलेंस शीट पे आना है और यहाँ 2025 को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको कॉपी एंड पेस्ट करके डॉलर साइन भी हम यहाँ अपना कर लेंगे। इसकी फॉर्मेटिंग कर लें, बोल्ड कर लेते हैं एंड देन आपने क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट करके अपने नेक्स्ट कॉलम्स को भी ऑटो फिल कर लेना है। राइट, अब हम लोग अपनी Alt-H-O-W करके इसको बंद कर लेते हैं एंड F4 की से अपने सारे कॉलम्स एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने इस कॉलम में नोट की हेडिंग दे देनी है एंड एक्सपेंडिचर्स के कॉलम में आकर आपने यहाँ हम बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट, एंड इस बॉर्डर को हम लोग अपने सारे कॉलम्स में कॉपी कर लेंगे। नाउ लेट्स डू अ बिट ऑफ फॉर्मेटिंग। राइट, अब हमने क्या करना है कि अपने इस एक्सपेंडिचर के बॉक्स के नीचे वाले रो में आके Alt प्लस एंटर करना है हमने एंड इस पूरे बॉक्स वाले एरिया को सिलेक्ट करके ये हमारा टोटल आ जाएगा। इसको सारे कॉलम में हमने कॉपी कर लिया। ये पूरा एरिया आपने सिलेक्ट करके सेपरेटर्स कर लेने हैं। नेक्स्ट हमने अपने ऑपरेटिंग इनकम वाले रो में आके इक्वल्स टू दिस प्लस दिस एक्सपेंडिचर करना है। प्लस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे उनको हम नेगेटिव फिगर में शो करेंगे। इस फॉर्मूला को आपने सारे कॉलम्स में कॉपी कर लेना है लाइक दिस। नेक्स्ट हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले रो में आकर इक्वल्स टू ऑपरेटिंग इनकम प्लस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अगेन प्लस हम इसलिए करें क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हमारे नेगेटिव फिगर शो होगा एज यू विल सी लेटर। इस फॉर्मूला को हम लोग पेस्ट कर लेंगे सारे कॉलम्स में। सिमिलरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी हम इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस टैक्सेशन and copy paste. Finally, total comprehensive income for the year जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा उसको हम अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही कंसिडर करेंगे। तो आपने इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिलेक्ट करके इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लें। राइट, यहाँ आके अपने नोट रेफरेंस दे देना है 3 जो कि हम आगे अपना बनाएंगे एसेट स्केड्यूल, उसका रेफरेंस है ये। लेट्स एडजस्ट द विड्थ ऑफ आवर कॉलम्स Alt-H-O-W एंड इसको 12 कर लेते हैं। अब हम इस एरिया पे आके मर्ज एंड सेंटर एंड टाइप प्रोजेक्टेड, इसको हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे एंड ऑन द टॉप हमने आके मर्ज एंड सेंटर
ये हमारी हेडिंग आ गई। आप लोग यहाँ इस एरिया आके इधर इक्वल टू साइन प्रेस करके बैलेंस शीट में आके यहाँ इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी हेडिंग को, एंड ये यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे हम अपने आगे रिपोर्ट्स में देखेंगे कि उधर हम लोग यही यूज़ करेंगे। तो आप लोग अगर एक रिपोर्ट में ओनली बैलेंस शीट जाके आपको अपना कंपनी नेम लिखना होगा एंड वो सारी रिपोर्ट्स में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, राइट। फाइनली हमने Alt VP करके इसको हम लोग 100% करेंगे, एंड देयर यू हैव योर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम एक न्यू वर्कशीट पे आ जाएंगे एंड यहाँ हम लोग अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्रिएट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की हेडिंग्स हम लोग फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पजेज यहाँ इजी एग्जांपल यूज़ करेंगे, ओनली कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स, बट जस्ट फॉर रेफरेंस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कुछ ऐसा दिखता है, बट डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी आप लोग कोई भी हेडिंग जिसकी दे सकते हैं। सो हम लोग इस रो पे आके अपना ओपनिंग बैलेंस फॉर 2025, कैपिटल इंट्रोड्यूस, टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम फॉर द ईयर जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से उठाएंगे, ड्राइंग्स, एंड फाइनली आवर क्लोजिंग बैलेंस फॉर 2025। अब हमने क्या करना है, इस एरिया से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करके यहाँ हमने इसको पेस्ट करते जाना है। एंड इधर आके हमने अपने ईयर्स को फॉर्मेट कर लेना है 2031 तक। नेक्स्ट है हमने यहाँ आ जाना है, मर्ज एंड सेंटर करके इधर बॉक्स क्रिएट कर लेना है, एंड इधर हम लोग कॉपी करके 3 बॉक्सेस क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग कैपिटल, यहाँ रिटेन्ड अर्निंग्स, टोटल एक्टिव, Alt HOW करके हम लोग अपने कॉलम्स की विड्थ फॉर्मेट कर लेंगे। राइट, प्रोजेक्टेड फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। एंड फाइनली यहाँ आप लोगों ने इक्वल्स टू करके बैलेंस शीट पे आके इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग अगर नेम एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ हम लोग अपनी रिपोर्ट का नेम, यहाँ पे आके इक्वल टू करके आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आके इसको सिलेक्ट कर लेना है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको चेंज करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। राइट, अब यहाँ आगे आपने इक्वल टू साइन करके डॉलर साइन को सिलेक्ट कर लेना है एंड कॉपी एंड पेस्ट। अब आप लोगों ने यहाँ आके इसको हम सेपरेटर्स कर लेंगे। एंड इस रो में आके इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंड यहाँ हम इसको
कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे। यहाँ हम लोग अपने टोटल्स के लिए सेट कर लेते हैं। राइट, अब यहाँ पे आके आप लोगों ने ऑल्ट एंड प्लस को सिलेक्ट करके अपना एरिया सिलेक्ट कर लेना है टोटल का, एंड एंटर एंड कॉपी एंड पेस्ट। अब हमने यहाँ 2026 में आके ऑल्ट प्लस एंड आपने बैलेंस एट जून 30, 2024 को भी सिलेक्ट करके यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड हिट एंटर एंड देन कॉपी एंड पेस्ट। Repeat this process for all the years. Right? अब इस फॉर्मूला को भी हम लोग सारे इसलिए कॉपी कर लेंगे। ठीक हो गया। फाइनली ऑल्ट VP करके आप लोगों ने व्यू में आके इसको 100% कर देंगे एंड ये हमारा प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग अगेन एक न्यू वर्कशीट पे आएंगे। यहाँ हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर जो कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से आएगा, आइटम्स नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ फंड्स जो कि एडजस्टमेंट होती है नॉन कैश आइटम्स की। यहाँ हम लोग डिप्रिसिएशन की कर लेंगे, एक नॉन कैश आइटम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस की हम लोग यहाँ एडजस्टमेंट्स डालेंगे। इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक्स एंड स्टोर्स जो कि हमारा करंट एसेट्स का पहला आइटम है बैलेंस शीट में। इसका लॉजिक आई होप आप लोगों को पता है एज एन अकाउंटेंट कि अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रही है करंट एसेट्स में तो ये एक नेगेटिव फिगर होता है, क्योंकि हम लोगों ने कैश स्टॉक परचेज करने में पे की हुई है, या फिर रिसीवेबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने इसको माइनस करना है क्योंकि हमें ये कैश अभी रिसीव नहीं हुई। एक्सेप्ट बैंक एंड कैश बैलेंस हमने अपने तीनों करंट एसेट्स को यहाँ टाइप कर लिया है। अब हम करंट लाइबिलिटीज़ पे आएंगे एंड ये एक ऑपोजिट होता है करंट एसेट्स का। यहाँ पे इंक्रीज जो होगा वो कैश में ऐड हो रहा है क्योंकि हम डिले कर रहे हैं अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट, दैट्स वाई इंक्रीज यहाँ ऐड होगा एंड डिक्रीज यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा। राइट, हमारे दोनों करंट लाइबिलिटीज़ के आइटम्स आ गए। यहाँ हम लोग कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेक्स्ट हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, रीपेमेंट ऑफ लोन जो हमारा लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है 6% लॉन्ग टर्म लोन, एंड फाइनली ड्राइंग्स। कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लास्ट हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Purchase of fixed assets,
cash inflow outflow from investing activities, net cash inflow outflow for the year जो इन सब का टोटल होगा, cash and cash equivalents at the beginning of the year जो हमारा opening balance है, and finally cash and cash equivalents at the end of the year जो closing balance हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। अब हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कीबोर्ड पे आपने कंट्रोल 1 प्रेस करके अलाइनमेंट पे आ जाना है एंड इंडेंट इसलिए हम 2 पे कर लेते हैं। राइट, नेक्स्ट हमने यहाँ ऊपर आके इक्वल टू साइन प्रेस करना है कीबोर्ड पे एंड देन हम अपनी बैलेंस शीट पे आ जाएंगे एंड ईयर को हमने सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको कॉपी पेस्ट करके इसकी अलाइनमेंट एंड 2025 को बोल्ड कर लेंगे एंड देन सिंपली आपने कॉपी पेस्ट करना है। अब हम अपने कॉलम्स की विड्थ एडजस्ट कर लेते हैं, Alt H O W, राइट। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इक्वल टू साइन करना है एंड बैलेंस शीट पे आके यहाँ आपने इसका लिंक दे देना है। Here हम लोग अपनी रिपोर्ट का नेम एंड फाइनली इस रो में आके इक्वल टू साइन आप लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाकर यहाँ से लिंक कर दें। राइट, अब हम लोग अपनी रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ आगे बॉक्सेस ये हमने अपनी रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग कर ली। अब हम अपनी रिपोर्ट के टोटल्स पे फॉर्मूलाज लगा लेते हैं। इससे पहले हम अपनी रिपोर्ट सेपरेटर्स इस पे कर लेंगे। एंड यहाँ पे आके इक्वल्स टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर प्लस depreciation, copy and paste, right। यहाँ आके हम लोग कीबोर्ड पे Alt and plus and select your box, copy paste। कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, equals to operating profit before working capital changes and plus आपके जो working capital changes हैं and copy paste, right।
अब यहाँ आके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने कीबोर्ड पे आके Alt plus एंटर करना है एंड select all your rows and hit enter. Now copy paste. Right? इसी तरह आपने इधर आके आप फिक्स्ड एसेट को इक्वल्स टू साइन ये करके एंड कॉपी पेस्ट. नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो फॉर द ईयर के लिए आपने इक्वल्स टू अपनी कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्लस कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन तीनों को सिलेक्ट करके हिट एंटर एंड कॉपी पेस्ट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर के लिए आपने फर्स्ट रो में 0, क्योंकि ये हमारा ओपनिंग ईयर है, ओपनिंग इसकी कोई भी नहीं होगी, 0 होगी. कैश कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए आपने क्या करना है, इक्वल्स टू नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो फॉर द ईयर एंड प्लस ओपनिंग. अब आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर के लिए क्या करना है, इक्वल्स टू साइन करके अपना जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है वो आपका इस ईयर का ओपनिंग हो जाएगा एंड इसको आपने कॉपी पेस्ट करके सारे ईयर्स पे पेस्ट कर लेना है. राइट नाउ अपने इस फॉर्मूला को यहाँ आपने कॉपी पेस्ट कर लें. राइट, सो ये हमारा फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का रेडी हो चुका है. फाइनल स्टेप Alt VP एंड व्यू में जाके हम इसको 100% कर लेंगे. राइट, नेक्स्ट वर्कशीट में हम लोग आके अपने नोट्स क्रिएट कर लेंगे. सो ये मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए थे, ये आप लोग यहाँ से देख के कॉपी कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन द कंपनी आप लोग अपने नोट्स खुद क्रिएट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर कंपनी. फाइनल शीट में हम लोग आके यहाँ अपना फिक्स्ड एसेट्स स्केड्यूल क्रिएट करेंगे. ये एक फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल का फॉर्मेट मैंने क्रिएट कर लिया है. हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एज एन एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स हैं. अब हम लोग फॉर्मूलाज यहाँ एंटर कर लेते हैं. जो हमारा एज ऑन 30 जून 2025 बैलेंस होगा वो इक्वल्स टू हमारा ओपनिंग बैलेंस फॉर 25 प्लस एनी एडिशंस और डिलीशंस ड्यूरिंग द ईयर एंड हिट एंटर. तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे. नेक्स्ट हम लोग रेट अपने डिसाइड कर लेते हैं. लैंड के लिए हम लोग 0% ले लेते हैं, बिल्डिंग 5% जो हमारे डेप्रिसिएशन रेट्स हैं, मशीनरी 10 एंड फर्नीचर ऑल्सो 10. अब हमने फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ फॉर्मूला एंटर करना है, इक्वल्स टू राउंड ओपन पैरेंथेसिस E9 माइनस G9 हमारा जो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है क्लोज पैरेंथेसिस इनटू 0% जो हमारा डेप्रिसिएशन रेट है फॉर लैंड कॉमा 0 एंड क्लोज पैरेंथेसिस. राइट, अब हमने इसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे अपने रिमेनिंग रोज में एंड यहाँ आके हम लोग अपने रेट्स चेंज कर लेंगे 10 एंड फाइनली ऑल्सो 10. राइट, अब एज ऑन जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो हमारी होगी ओपनिंग एंड फॉर द ईयर होगी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस एंड कॉपी एंड पेस्ट. ना हमारी जो रिटन डाउन वैल्यू है वो हमारी होगी हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं माइनस हमारी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. सो इक्वल्स टू दिस फिगर माइनस हमारी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है टोटल एंड इसको हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे. अब हमने टोटल्स के लिए क्या करना है, यहाँ आके ऑल्ट एंड प्लस का साइन आपने कर दें, इन सब को आप सिलेक्ट कर लेंगे
कॉपी पेस्ट, राइट। अब एज यू नो हम लोग मल्टीपल ईयर्स के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारी हो गई 2025 की। अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए करेंगे। आप लोग इसको फुल फॉर्मेट को कॉपी कर लें एंड यू कैन पेस्ट हियर। इसको हम 3.2 नेम दे देंगे एंड यहाँ हम लोग एक और रो जो है कॉपी कर लेंगे, एक और क्रिएट कर लेंगे एंड इसके अगेंस्ट हम लोग ये फॉर्मूलाज जो हैं ये रिमूव कर लेंगे। राइट एंड नाउ हम अपनी डेट्स यहाँ टोटल हमारा 25 हो गया एंड ये हमारा 26 हो गया एंड सिमिलरली यहाँ भी हमने यहाँ इसको 26 कर लेना है। Now repeat this process for all the years. And finally यहाँ 31 आ जाएगा। So ये हमारे सारे ईयर्स के फिफ्थ ऐसे स्केड्यूल्स क्रिएट हो चुके हैं। फाइनली हम लोग अपना नोट 4 क्रिएट करेंगे। We will name it General एंड ये हम लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट अब फाइनल हो चुका है। now फाइनली हम Alt VP करके अपने व्यू को 100% कर लेंगे एंड देयर यू हैव योर फॉर्मेट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम अपनी बैलेंस शीट पे वापस आ जाएंगे एंड यहाँ पे 2025 हमारा बेस ईयर है, तो यहाँ जो हम डाटा इनपुट करेंगे वो स्टैटिक होगा एंड नेक्स्ट ईयर्स में जितने भी मल्टीपल ईयर्स हैं आपके वो डायनामिक होगा, ऑटोमेटिकली वो पॉपुलेट हो जाएगा। उसके लिए हमने फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल्स टू राउंड ओपन पैरेंथेसिस आपका 2025 का सेल इंटू 1.1 इसलिए कि हम 10% अपनी इन्फ्लेशन रेट ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं 10% से हर ईयर इंक्रीज होगा हमारा डेटा, कॉमा 0 एंड क्लोज पैरेंथेसिस। ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया है। आपने क्या करना है कि इसको कॉपी करके जितने भी सेल्स में आपने इस फॉर्मूला को पेस्ट करना है यहाँ सिलेक्ट करके Alt E S एंड आपने फॉर्मूलाज पे क्लिक करना है एंड देन ओके एंड देयर यू हैव आपके सारे फार्मूला जो हैं ये अपनी अपनी जगह सेट हो गए हैं। इसी तरह आपने जो है अकाउंट्स पेबल में आना है एंड यहाँ आपने इक्वल्स टू राउंड ओपन पैरेंथेसिस दिस सेल इंटू 1.1 कॉमा 0 क्लोज पैरेंथेसिस एंड इसको आपने कॉपी करके साइड से सिलेक्ट कर लेंगे हैं Alt E S एंड फॉर्मूला एंड देन ओके राइट। ये हमारे प्रीवियस ईयर से लिंक हो गए हैं, हर ईयर 10% से हमारा डेटा इंक्रीज होगा राइट। अब हम अपने दूसरे फील्ड्स को भी लिंक कर लेते हैं। एसेट पे आपने क्या करना है इक्वल्स टू साइन एंड 2025 का जो आपने बैलेंस लेना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली इसी तरह आपने हर ईयर को सिलेक्ट करना है
राइट, ये हमारे सारे ईयर्स लिंक हो गए हैं। अब हमने टोटल इक्विटी पे आना है, इक्वल्स टू साइन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाके आपने जो है ये वाला फिगर इस पर आपने एंटर करना है, एंड सिमिलरली इसी तरह आपने रिमेनिंग ईयर्स को भी सिलेक्ट करना है। ये हम लास्ट ईयर भी सिलेक्ट कर लिया। नाउ ये जो लॉन्ग टर्म वाला पार्ट है इसको हम एज इट इज़ छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हम जो भी आपको बैंक स्केड्यूल देगा या आपका जो लोन स्केड्यूल होता है उसमें जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा हर ईयर का, वो क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ शो करना है। हम अपनी एग्जांपल में अभी डाटा जब इनपुट करेंगे तो हम आपको बताएंगे। राइट, नेक्स्ट अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाते हैं। कमीशन इनकम सेम आपने 2025 यहाँ भी इसको स्टैटिक यहाँ होगा, हम डाटा इनपुट करेंगे एंड ऑल ऑफ द रेस्ट कॉलम्स आपके डायनामिक होंगे। यहाँ फॉर्मूला एंटर कर लेते हैं हम, इक्वल्स टू राउंड ओपन पैरेंथेसिस दिस सेल into 1.1 comma 0 close parenthesis, एंड इसको आप और ES and formula and then OK। राइट, अब यहाँ भी आप एक्सपेंसेस के लिए भी हम सेम करेंगे, सारे हम फील्ड सिलेक्ट करके Alt ES and formula कर लेंगे एंड देन OK। राइट, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के लिए भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, Alt ES and formula। राइट, अब टैक्सेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कोई भी रेट 5% यहाँ कर लेते हैं, इक्वल्स टू राउंड ओपन पैरेंथेसिस दिस इनटू 5% कॉमा 0 एंड क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है, ये हम पेस्ट कर लेंगे। राइट, अब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर इक्वल टू साइन करके हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाएंगे एंड इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। राइट, सिमिलरली आपने ये सब ईयर्स के लिए ऐसे प्रोसेस फॉलो करना है। इस तरह हमने सारे ईयर सिलेक्ट कर लिए। अब नेक्स्ट यहाँ हम ड्राइंग्स जो है फर्स्ट ईयर में यहाँ मैनुअली इनपुट करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर में खुद ही पॉपुलेट हो जाएगा। उसके लिए हमें फॉर्मूला इक्वल्स टू राउंड ओपन पैरेंथेसिस दिस सेल इनटू 1.1 एंड कॉमा 0 क्लोज पैरेंथेसिस, एंड इसको आपने सारे ड्राइंग में कॉपी कर लेना। राइट, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर पे आपने इक्वल टू साइन करके टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंड इसको हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे। राइट, अब डेप्रिसिएशन पे आपने आना है
एंड इक्वल्स टू साइन, फिर जैसे स्केड्यूल में जाके हर ईयर की फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आपने यहाँ एंटर कर लेनी है। राइट, अब यहाँ पे 2025 का ईयर इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक पे जाके हमने माइनस एंड फर्स्ट ईयर है तो हम लोग 2025 का ही ईयर सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको सिलेक्ट करके यहाँ एंटर कर लेंगे। सिमिलरली इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल में भी हम बैलेंस शीट जाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड फाइनली माइनस, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर में आउटफ्लो हुए हैं तो इसलिए नेगेटिव, एंड हमारे इंक्रीज इन पेबल्स हुए हैं तो प्लस साइन करके हम अकाउंट्स पेबल एंड प्लस साइन करके एक्रूड एक्सपेंसेस पेबल। अब 2026 में आगे आपने क्या करना है, इक्वल्स टू साइन एंड बैलेंस शीट में आना है। यहाँ पे आपने दिस ईयर माइनस 2026 एंड रिसीवेबल्स के लिए भी आपने इसको कॉपी करना है, इधर तक पेस्ट करना है, Alt ES एंड फॉर्मूला। राइट, तो इधर अगर आप बैक जाएं तो ये इस सेल के साथ लिंक हो गया है। अब हमने लाइबिलिटीज के लिए क्या करना है, इक्वल्स टू साइन, इसका अपोजिट करेंगे क्योंकि इंक्रीज यहाँ पे पॉजिटिव फिगर होता है, सो नेक्स्ट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। राइट, एंड इसको हम यहाँ पे नीचे Alt ES एंड फॉर्मूला कर लेंगे एंड देन ओके। राइट, बैक जाएं तो आपको ये वाला लिंक हो चुका है इसके साथ। अब इसको पूरे को सिलेक्ट करके हम कॉपी एंड देन यहाँ हम Alt ES एंड फॉर्मूला पे क्लिक कर लेंगे। राइट, तो अगर आप बैक जाएं तो ये इस ईयर के साथ हो चुका है। राइट, अब कैपिटल इंट्रोड्यूस के लिए हमें क्या करना है, इक्वल्स टू साइन, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में चले जाएंगे एंड यहाँ हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको हम हर ईयर के लिए इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए हम फर्स्ट ईयर का जो डाटा है वो हम डायनामिक पुट करेंगे अपने स्केड्यूल से जितनी हमने रीपेमेंट किया। नेक्स्ट ईयर के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू बैलेंस शीट पे जाएंगे एंड दिस ईयर माइनस प्रीवियस ईयर हम करेंगे एंड इसको हम पेस्ट कर देंगे। राइट, एंड 6% लॉन्ग टर्म लोन हम लोग अपने स्केड्यूल से लेंगे जितना हमने लोन अवेल किया है एंड ड्राइंग्स के लिए हम करेंगे इक्वल टू साइन, अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जाके हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड सिमिलरली हर ईयर के लिए हम ऐसे ही रिपीट करेंगे।
राइट। अब हम आएंगे फिक्स्ड एसेट्स पे, एंड फिक्स्ड एसेट्स पे आपने क्या करना है, माइनस साइन करके अपने फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल में फर्स्ट ईयर का जो आपका स्केड्यूल है इसमें एडिशंस पे हम क्लिक कर लेंगे एंड एंटर। एंड सिमिलरली हर ईयर के लिए आपने इसी तरह इसको सिलेक्ट करना है। राइट, सारे ईयर्स हमने सिलेक्ट कर लिए हैं एंड ये हमारी फॉर्मेटिंग हमारे सारी रिपोर्ट्स की कंप्लीट हो गई है। अब इन सब को लिंक करने के बाद फाइनली हमने अपनी बैलेंस शीट को कैश फ्लो के साथ लिंक करना है। तो यहाँ हमारा जो कैश एंड बैंक बैलेंस है हम इक्वल्स टू साइन करके अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आएंगे एंड हम हर ईयर का ये एंडिंग जो बैलेंस है इस पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड नाउ यू कैन कॉपी पेस्ट। इस तरह हमारे ये जो फील्ड्स हैं ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ लिंक हो चुकी हैं। राइट, अब हमने क्या करना है कि हम अपना डेटा एंटर करेंगे एंड हमारी बैलेंस शीट एंड हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद ब खुद नेक्स्ट ईयर के डाटा ऑटोमेट करके कैलकुलेट कर लेगा। सो फर्स्ट ईयर का हम लेट्स अज्यूम स्टॉक्स एंड स्टोर्स पहले इनपुट करते हैं एंड देयर यू सी आपकी जो है नेक्स्ट ईयर्स के सारे फीस खुद पॉपुलेट हो चुके हैं। 1200 लेट्स सपोज अकाउंट्स रिसीवेबल, 3470 let's suppose advances and deposits। right, now come down, यहाँ हम एज्यूम करते हैं हमारे पास बैंक का स्केड्यूल है और हमने 20,000 हमारे फर्स्ट ईयर की पेमेंट के बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह गया है एंड हम इसी सिमिलरली 4,000 की पेमेंट कर रहे हैं हर ईयर। तो ये हमारा जो लोन है वो 4,000 से पर ईयर रिड्यूस होता जा रहा है एंड पे ऑफ हो रहा है। राइट, एंड ये यहाँ 0 एंड 0 ये हमारा लोन हो गया एंड अकाउंट्स पेबल आपने 8100 लेट्स सपोज 2025 में है एंड 950 हमारे अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। सो देयर यू हैव हमारे जो जितनी भी फील्ड्स में हमने पॉपुलेट करनी थी वो हो चुकी हैं। नेक्स्ट अब हमने आना है अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एंड यहाँ हम फर्स्ट ईयर का लेट्स अज्यूम 25,344 इनकम ले लेते हैं एंड सैलरीज जो है -5064 -3635 यहाँ हमारे एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली यहाँ तक पॉपुलेट हो चुके हैं एंड यहाँ हम एक पॉइंट मिस हो गया था, इधर आप लोगों ने माइनस करके अपने फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल में जाना है एंड हर ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ आपने एंटर कर लेनी है। राइट, हर ईयर की हमने डेप्रिसिएशन यहाँ एंटर कर ली। नाउ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस पे आके हमने -1768 फर्स्ट ईयर का एज्यूम किया एंड ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कैलकुलेट हो गए। अब हम टैक्सेशन पे आ जाते हैं। यहाँ आपने जो है फॉर्मूला में एक करेक्शन कर लेनी है, माइनस करके आपने सबको कॉपी पेस्ट कर लेना है क्योंकि ये हमारा फिगर जो होगा वो नेगेटिव में होगा, हमारा एक्सपेंस है टैक्स का। राइट, नेक्स्ट हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आ जाते हैं एंड यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल ऑफ $5,000 एंड ड्राइंग हमने की है $4,000।
तो ये आपका फर्स्ट ईयर का फिगर आ गया एंड नेक्स्ट ईयर्स भी आपके ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गए हैं। स्टेप ऑफ चेंजिंग एक्टिविटी आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, यहाँ भी हमने सब लिंक दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ पॉपुलेट खुद होगा। यहाँ सिर्फ आपने एक अमाउंट एंटर करनी है, वो है लोन की। 6% लॉन्ग टर्म लोन आपने जो भी स्केड्यूल में होगा, जो आपने अप्लाई किया हुआ है। हमारी एग्जाम्पल में हमने 24,000 का लोन अवेल किया हुआ है एंड फर्स्ट ईयर में हमने पेमेंट भी इसकी 4,000 की है। अब हम अपने फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर में एडिशंस डाल देंगे 10,000, 5,142, 250 एंड 100 एंड डेप्रिसिएशन भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुकी है एज यू कैन सी। अब नेक्स्ट ईयर में आपने क्या करना है, इस फिगर को कंट्रोल सी करके RESV एंड ये जो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फर्स्ट ईयर है उसको हमने ओपनिंग ले लेना है यहाँ RESV राइट एंड 2025 का फिगर जो भी हमारे थे इसको भी कॉपी करके आपने यहाँ RESV कर लेना है। इसी तरह आपने सारे ईयर्स को पॉपुलेट कर लेना है। लास्ट ईयर यहाँ आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है राइट। ये जी हमारी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई। अब आपने बैलेंस शीट में आके चेक करना है कि आपके फिक्स्ड एसेट्स भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, आपका कैश एंड बैंक भी यहाँ हो रहा है शो, जो कि हमने लिंक किया था। एंड कैपिटल भी आ गया यहाँ, टोटल इक्विटी आपकी। एंड हमारा जो बैलेंस शीट है वो डेबिट एंड क्रेडिट साइज दोनों आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि बोथ आर इक्वल, टोटल एसेट्स एंड टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी साइज आर इक्वल। सो इस तरह आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं एंड हर रिपोर्ट में आप लोग जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर का डेटा एंटर करके नेक्स्ट ईयर्स को ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर सकते हैं सिंपली बाय एडिंग अ फ्यू फंक्शंस। If you found this video helpful, please like and subscribe to Learn Accounting Pro Studio for more accounting and Excel tutorials. Thanks for watching, keep learning, and I'll see you in the next one. Hello viewers, welcome back to Learn Accounting Pro Studio. आज हम सीखेंगे कि आप लोगों ने पिवट टेबल में रनिंग बैलेंस इधर राइट साइड पे कैसे क्रिएट करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ रहे थे, सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आप लोगों ने इस तरह का टेबल क्रिएट कर लेना है। मैंने यहाँ जर्नल एंट्रीज पास करनी है थोड़ी सी एज एन एग्जांपल। अब आपने क्या करना है, गो टू इंसर्ट, क्लिक ऑन पिवट टेबल एंड क्लिक ऑन ओके। ये आपकी पिवट टेबल फील्ड यहाँ है। राइट साइड पे आपने सारे बॉक्सेस को चेक कर लेना है राइट। अब थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग इसकी ठीक कर लेते हैं। गो टू डिज़ाइन, रिपोर्ट लेआउट एंड शो इन टेबुलर फॉर्म। नाउ अगेन गो टू रिपोर्ट लेआउट एंड क्लिक करना है रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। अब क्या करना है कि अकाउंट को हम ड्रैग कर लेंगे, डेट के ऊपर ले आएंगे। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग बेटर कर लेते हैं
separators, and let's adjust the width of our columns. राइट, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हम जाएंगे यहाँ एनालाइज पे, फील्ड आइटम एंड सेट्स, कैलकुलेटेड फील्ड्स। यहाँ आप लोगों ने एक फील्ड क्रिएट कर लेनी है, इसका नाम दे देना है बैलेंस, एंड इधर आप लोगों ने डेबिट माइनस क्रेडिट, एंड ओके पे क्लिक कर लेना है। ये आपका एक बैलेंस का फिगर आ गया है, लेकिन नोटिस कि ये बैलेंस अभी रनिंग बैलेंस नहीं है। यहाँ ये 5 लाख इसके ही अगेंस्ट ये बैलेंस शो कर रहा है। ये 40,000 इसको माइनस करके नहीं कर रहा। इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ रोज़ वाली साइड पे आके आपने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, फील्ड सेटिंग्स, एंड इसको नन कर दें। इसी तरह रेफरेंस फील्ड सेटिंग्स, एंड इसको नन कर दें। राइट, आप लोगों ने अकाउंट और डेट को नन नहीं करना, इसको ऑटोमेटिक ही आपने रहने देना है, डेट को भी एंड फील्ड सेटिंग्स को। राइट, अब फन पार्ट क्या है, आपने यहाँ आना है एंड राइट माउस क्लिक, शो वैल्यू एज, यहाँ रनिंग टोटल इन, एंड यहाँ आपको ड्रॉप डाउन में सारे ये रोज़ के आपको ऑप्शंस दे रहा होगा। यहाँ आपने डेट को सिलेक्ट करना है, एंड देयर यू आर, सी द मैजिक, ये आपका इसने रनिंग बैलेंस यहाँ क्रिएट कर दिया है। अब आप इसमें स्लाइसर भी ऐड कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट में। आपने क्या करना है कि गो टू एनालाइज, इंसर्ट स्लाइसर, और अपने अकाउंट को क्लिक कर देना है, एंड देन प्रेस ओके, एंड देयर यू हैव योर स्लाइसर। इधर आपके लेजर्स के नेम्स आ गए। इसमें आप कोई भी अपना लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप अपना रनिंग बैलेंस चेक कर सकते हैं। ये देखें आपका रनिंग बैलेंस आ रहा है। राइट, if you found this tutorial helpful, please give it a thumbs up and subscribe to Learn Accounting Pro Studio for more practical accounting and Excel tutorials. Thanks for watching, keep learning, and I'll see you in the next one. Hello viewers, welcome back to Learn Accounting Pro Studio. Today we will learn how to create a fully automated cash book in which you can record your personal or business cash or bank transactions. We will design a fully automated cash book just like this one here. To the left side we have receipts, both cash and bank receipts, and to the right side we have payments, cash and bank payments. In the upper section we have a summary of receipts and payments, and which get updated automatically, and here we have closing balance. This will also get updated automatically, and also the rows here get formatted automatically as well. So let's start. We will open a new worksheet. Now we will come down to row number B9 and enter our headers for our cash book, starting from date, voucher number, particulars, in which we will write our details, check number, cash, and bank. Now select this whole range here, press Ctrl C on your keyboard and Ctrl V here and paste it over here. Now we will do a bit of formatting. We will select all of this range, center, middle align, bold, and we will increase the size of our fonts. And now on the keyboard, Alt H O H for upper rows 30, and we will change the color. Control hold and select this area as well, and we will select the color, this one,
and we will change the font color to white. Now let's adjust the width of our columns. Select this column, Control hold, and this column. Similarly, change the width of remaining columns. Right. Now we will color only the first row here, as we will create a table for our transactions and it will get updated automatically, as you will see later. So we will change color this here, and for cash and bank we will select this color. Now we will copy these and paste them here, and now let's adjust the width of our columns, column H, and this column A here, Alt H O W and 1. Right. Now on top of the headers here, we will select this area, merge and center, and type receipts. We will color it this, increase the font size, bold, and change the font color to white, and copy and paste here and name it payments. Right. Now select this range here all the way till here, Control hold on the keyboard, and also select this area till here. Then press Control 1 on your keyboard, go to borders, select this style, white color, and click on inside and outline, and then click OK. There we have our borders. Now select these cash and bank cells, Control hold, and also select these cells and click on this drop down $sign and select $sign as our currency symbol, and change the color of the font to white. Next step is to copy this receipt area here and paste it over here, and this payment area we will paste it over here. Now select this area till here and merge and center, and copy and paste in this 6th row. And now we will change the color. We will select this color. Now select this whole area and press Control 1 on the keyboard, go to borders, same, select white color and inside and outside, and press on OK. Now copy and paste it over here. Now come to this 7th row and select till H column and merge and center, and select this range and merge and center. Now we will select this whole range over here, press Control 1 on your keyboard, we will go to fill effects, and in this color 2 drop down we will select this color and press OK, and then OK, and there we have formatted our row just like this. Now we will type closing balance, we will bold it and increase the font size. Now we will select our range from here till here, press Ctrl T on the keyboard for table, check my table as headers box,
and click on OK. And there we have created a table which will get formatted automatically once you enter your data into other rows. Now as you can see, we are getting this column 1 here. For that we have to do a bit of formatting. Go to this Design tab, click on this drop down menu and click on Clear. Now press F2 and clear this column heading here and give a space bar and press enter. Now we will adjust the width of this column, Alt HOW and select 1. Now you can see we are getting date 2, voucher number 3 and these numbers here. We will simply remove them and space bar and then enter. Do it for all these columns. Right. Now in row 4 here, we will type cash total. In row 5, bank total. And in row 6, grand total. Now select this area. We will align it left. Change the color to white and bold. Now in G4 cell here, we will enter a function equals to sum, open parenthesis. Now come down here and you will see this arrow sign and click here and then close parenthesis. This will calculate its subtotal over here. Now for the bank, use equal to sum, open parenthesis, come down here. When you see this arrow sign, click here and close parenthesis. Now for grand total, press Alt and equals to on the keyboard and hit enter. Now select this and change the font color to white and select this $sign. Now we will copy this and paste it over here. Now for the sum function, apply the same technique as applied on the receipt side, equals to sum, open parenthesis, come down here and select this area, close parenthesis, equals to sum, this area, close parenthesis, and on the keyboard Alt equals to. Now change the font color to white and select $sign. Right. Now for this closing balance, we will enter formula equals to grand total of receipts minus grand total of payments and hit enter. Now we will increase the size and bold it. Right. Now we will come over here to the top and select area, merge in center, and we will type cash book. And now we will increase the font size. We'll make it 24 and we will change the color, this one, and bold it. Now we have to show month and year here. For that we will go to insert and click on this insert word art and select this. We will type our month, July 2025, and we will select it, go to home, reduce the font size
and we will adjust it here and select all of this and hold it. Right, now on top here we want our heading, our company name. We will press Alt HOH for our row height and make it 30. Now select all of this area, merge and center, and type your company name, Learn Accounting Pro Studio. We will align it, increase the font size and bold it, and change the color here. We will adjust the alignment, bring it here. Now select these both, Control 1 on the keyboard, go to borders, select this white color inside and outline and press on OK. So there you have your format completed. Last thing we will do is come to this in row number 10, go to View, Freeze Panes and Freeze Pane. This will help you whenever you scroll down and the headers won't get disappear. Now we will press Alt W V G to remove the grid lines. And the beauty of this table that we have created here is that you have to only format this row, and the rest of the rows you won't have to drag all the functions and formatting down. It will get formatted automatically, as we will see when we enter our transactions. So now let's enter our transactions. July 1st, 2025. We will center it and press Ctrl 1 on the keyboard, go to numbers and select this format and press OK. Now go to particulars, type opening balance, and let's suppose this is $5,000 and this is $10,000. You can see here this is getting formatted automatically. Now for the payment side, July 1st, 2025, same, we have to format this once and then the rest will be formatted automatically. Let's suppose we have made a cash payment, so cash payment voucher number 1, and in particulars type to repairs account, and we have made cash payment of 500 USD, and you can see we have updated this automatically, and this has also been updated. Now we will come down to our second row and enter date July 2nd, 2025. You can see the format has been updated. For example, cash receipt voucher number 1 to sales account, and for example we have made a sale of $500 US, and you can see this is getting updated. So just like that, you can easily automate your cash work. If you found this tutorial helpful, please give it a thumbs up and subscribe to Learn Accounting Pro Studio for more practical accounting and Excel tutorials. Thanks for watching, keep learning, and I'll see you in the next one. Hello viewers, welcome back to Learn Accounting Pro Studio, where we make accounting and Excel feel easy and fun. Ever wondered how to maintain your income and expense records?
and automatically see your profit or loss in Excel? Well, today is your lucky day. I'll walk you through a foolproof automated profit and loss tracker in Excel, step by step, with real data, simple formulas, and a clean dashboard that updates automatically. Stay with me, you're going to love this. On the left side here, we would enter our income, and on the right side, we would enter our expenses. The total of our income would automatically be reflected over here on the dashboard, and the total of our expenses would be reflected over here. If total income is greater than total expenses, then we have a profit which would be reflected over here. If the total expenses are greater than total income, then we have a loss which would be reflected over here. Now let's see all these effects with the help of an example. Notice that we have total income of $3,000. We make one income entry over here. Let's suppose on 6th July we have rental income and the amount is $500. You can see the total income has updated and become $3,500. Now notice the total expenses are $1,000 and total profit is $2,500. We make one expense entry over here on 6th July, and suppose these are for legal charges of $100. Now notice total expenses has become $1,100 and total profit has reduced to $2,400. To confirm our loss field is working, let's increase our expense over here. Let's make it $3,000. Now you can see we have a loss of $500 and this dashboard is working perfectly. So now let's move forward and learn how to create this dynamic income and expense sheet in Microsoft Excel. Here we have a blank spreadsheet. We will select cells from B2 till J8 like this. Now fill the color, go to colors and select color this or any color of your choice. Now select this row 9 and we will select a lighter color like this. Now we will select this row 3 and we will go to border, line color. We will select a slightly light color like this and go to borders again and select thick bottom line. We have a bottom line here like this. Now select cells from H3 till J3, merge in center and type over here income and expense sheet, and we will write down our month and year. We would increase the size like this and we would change font colors to white. We will bold and increase font size to 14. Increase the size like this, and on the left side here you can write down the company's name, Learn Accounting Pro Studio. Change the color to white, bold, increase font size to 14. Right, now come to cell B13 over here and type your headings, serial number, date, description, and finally amount. Now we will do a bit of formatting. We will bold them like this. We will increase size. Now we will select row 13 and row 14 like this and press Ctrl T on the keyboard to convert this into a table. Now
check this my table as headers box and press OK, and there we have created a table. Now we will go to design, and to remove the branded rows, uncheck this branded rows box. Now the beauty of the Excel table is that when you format one row, the other rows gets formatted automatically, and you don't have to format each row or cell manually, for example for numbers separators or for currency symbols. Now to remove filters from the headers here, simply press Ctrl Shift and L on the keyboard. Now we can change the color of the headers here. We can select a darker color like this. Now in row 11 here, select cells B11 to E11 and click on Margin Center. Now type income and bold it, increase the font size to 12 and change font color to white, and we will color it blue like this. Now copy this whole left side till here and paste it onto the right side over here and type expense instead of income. Now we will reduce the row height, Alt HOH, and make it 5 and Alt HOH 5. Now we will reduce the column width. Similarly here we will increase the size of description and amount. Right. Next we are going to insert 4 rectangles for our dashboard over here. For that, click on Insert, go to Shapes and select this rectangle, and then draw a rectangle line with the help of the mouse like this. Now in the Drawing Tools and Format menu, go to Shape Fill and select white color, and go to Shape Outline and select No Outline. Right, we would increase the size a bit more like this. Right, now press Ctrl D to duplicate the shape and set this rectangle over here next to it, and then Ctrl D again, and then Ctrl D again for 4 shapes, and we can set them like this. Right, now to align these shapes, select all the shapes by holding Shift key on the keyboard like this. Now go to Drawing Tools Format menu and go to Align, then Align Middle, then again Align and distribute horizontally, and finally again Align and distribute vertically. Next we will enter our icons here, which you can download from the internet. For that we will go to Insert, Pictures, and we would select our income icon and insert. We would reduce its size like this and set it over here like this, and similarly we would set our all other shapes doing the same process. Now as you can see, we have set all our icons. Now we want to write down the headings of our icons as total income, total expense, total profit, and total loss. For that, click on Insert, Shapes, and then select this text box and draw this text box over here,
and type total income. Now select all the text by pressing Ctrl A and bold. Now go to drawing tools, format, shape fill, and select no fill, and then shape outline, no outline. We will drag it and set it over here. Right, now we need to duplicate this box. Press Ctrl D and set it over here, and Ctrl D again and Ctrl D again. Right, now we need to change the headings. Total expense, just need to drag it a bit like this. This is total profit, and finally total loss. Right, now select all these headings by holding Shift key on the keyboard. Go to Align and align middle. Next, below these headings, we need our total figures for each heading. So for that, we will first enter our transactions for income and expenses. Here you can see we have entered our transactions. You can add currency symbols to your data by selecting these fields and go to this accounting number format and select dollar or any currency of your choice, and do this over here as well. Right, now for total figures on our dashboard, we will open a new worksheet. In this worksheet, I will write down our dashboard headings: income, expense, profit, and finally loss. Now in the income column, I will write down a function equals to sum, open parenthesis, go to income and expense sheet and select this area over here, and then close parenthesis and enter. Here we have our total of income. Similarly for expenses, equals to sum, open parenthesis, go back to your income and expense sheet and select this area, close parenthesis and hit enter. Right, now for profit, we will write down function equals to if, open parenthesis, income is greater than expense, then income minus expense, otherwise 0, then close parenthesis and hit enter. Now finally for loss, we will write down function equals to if, open parenthesis, income is less than expense, then expense minus income, otherwise 0, and close parenthesis and hit enter. Now we will do a bit of formatting. Select all these and put on separators and this dollar sign and adjust it like this. Right, now we want these figures on our dashboard
over here. So for that, click on Insert, Shapes, Text Box, and draw text box over here. In the text box and this formula bar, type equals to, and then go to your working sheet and click on your income figure and hit enter. Now we will increase our font size to 14, bold. Now go to your formats menu, shape fill, and select no fill and shape outline and no outline. Now select this box and press Ctrl D for duplicate, set it over here and press Ctrl D again and Ctrl D again. We can adjust them by dragging them like this. Now do the same for each heading. Select each heading and go to this formula bar and type equals to and go to your working sheet and click on expense figure and hit enter. Repeat this for profit and loss as well. Equals to and select profit figure, and finally equals to and your loss figure. To copy the format of the figures, click on income figure, click on format painter and click on expense figure like this. And now you can repeat for others as well. Click on format painter and click here, and then click on format painter and click over here. Right? And so now we have completed the formatting of our sheet. We would now enter one or two transactions to see if it's actually working. We would come here, give it serial number 8 and date, and for example sales income, and we would enter sales of $1,000, and there you can see this has updated. And in expenses we would enter our 8th serial number, date, and we would enter our expenses, salary expense, and here you can see we have 500 of profit. We can enter an expense of $1,000, and there you can see our total loss has again become 500. So just like that, you can create a fully dynamic and a fully automated income and expense sheet in Excel just by following a few easy steps and by entering a few easy Excel functions. If you found this tutorial helpful, please give it a thumbs up and subscribe to our channel Learn Accounting Pro Studio for more practical accounting and Excel tutorials. Thanks for watching, keep learning, keep growing, and I'll see you in the next one. Hello viewers, welcome back to Learn Accounting Pro Studio. क्या आपको Excel में डाटा एंटर करते वक्त परेशानी होती है? क्या आप चाहते हैं कि ये काम आसान और मज़ेदार हो? तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप Excel में डाटा एंट्री फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी कोडिंग या VBA के। सो लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए कि किसी भी वजह से आपको Excel में मैन्युअली डाटा एंटर करना पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि ये तजुर्बा जितना हो सके उतना ईजी हो, तो आप डाटा फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर तब फ़ायदेमंद होता है जब आपके टेबल्स बहुत वाइड हों और आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग से बचना चाहते हैं। अब चीज़ों को सिंपल रखने के लिए इस एग्जांपल में मेरे पास एक छोटा सा टेबल है जिसमें मैं डाटा एंटर करना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ हेडिंग्स हैं वाउचर नंबर,
डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट एंड एंटर्ड बाय। डाटा एंटर करने का एक तरीका ये है कि सीधा यहाँ इनपुट कर दिया जाए। लेट्स सपोज यहाँ हम फर्स्ट एंट्री करते हैं और ये वाउचर नंबर मैं देता हूँ EXP001। डेट हम दे देते हैं 8/5/2025। डिस्क्रिप्शन में टैक्सी टू एयरपोर्ट, अमाउंट $85, एंटर्ड बाय जॉन। राइट। लेकिन अगर मुझे कोई चेंजेस करने हों तो मुझे पहले उस स्पेसिफिक सेल पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ फॉर्मूला बार पे आके इधर एडिट करना पड़ेगा लाइक दिस, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा एक और तरीका है फॉर्म का इस्तेमाल करना, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, वो ये कि आपको अपने डाटा को ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही आसान है। आपको बस अपने डाटा सेट के अंदर कहीं भी आकर क्लिक करना है और फिर कीबोर्ड में Ctrl+T आपने प्रेस करना है। ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। माई टेबल हैज हेडर्स बॉक्स को चेक करना है और ओके क्लिक करना है। तो ये आपका टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ आके इसकी सेटिंग्स चेंज करेंगे और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे आ जाएंगे। तो अब मेरा डाटा सेट ऑफिशियल एक्सेल टेबल बन गया है। मैं फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन फॉर्म का बटन कहाँ है? अगर आपको यहाँ अपनी वर्कबुक में फॉर्म का बटन नज़र नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, यहाँ रिबन में आके किसी भी टैब में राइट माउस क्लिक करना है और आपने ये कस्टमाइज द रिबन में आके ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने कमांड्स नॉट इन द रिबन को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ स्क्रॉल डाउन करके F में आके आपने फॉर्म आपको यहाँ ढूंढना है, इस पर क्लिक करना है। पर इससे पहले आपने एक न्यू टैब एंटर करके फिर ऐड करना है एंड ओके प्रेस करना है। तो ये देखें यहाँ न्यू टैब बन गया है, यहाँ फॉर्म का बटन आपको नज़र आ रहा है। इस पे क्लिक कर देंगे हम एंड ये हमारा डाटा यहाँ ऑलरेडी शो हो रहा है। लेकिन यहाँ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि अगर आप लोग अपने टेबल के बाहर इस तरह आके फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का मैसेज दे देता है कि ये फॉर्म आपका ओपन नहीं हो सकता। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एक्टिव सेल कहाँ हैं। इंश्योर करें कि आप टेबल के अंदर कहीं हैं और फिर आप फॉर्म के बटन पे क्लिक करें ताकि फॉर्म एक्टिवेट हो जाए। राइट। तो यहाँ हम अपने टेबल में किसी भी सेल में जाके अपना फॉर्म ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझे अपनी पहली लाइन का डाटा नज़र आ रहा है। न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए मैं इधर यहाँ इस न्यू बटन पे क्लिक करूँगा। सो लेट्स से मैं फर्दर एंट्रीज करता हूँ। यहाँ हम EXP002 इसका नेम दे देते हैं। इधर डेट हम दे देते हैं 8/6/2025। डिस्क्रिप्शन क्लाइंट लंच मीटिंग, अमाउंट $120, एंटर्ड बाय एमिली। राइट। और इसको टेबल में ऐड करने के लिए बस सिर्फ आपने एंटर प्रेस करना है ऐसे, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे टेबल में एंटर हो चुका है। ये ऑटोमेटिकली आपको अगले रिकॉर्ड पे ले जाता है ताकि आप और डाटा ऐड कर सकें। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप यहाँ टेबल के थ्रू यहाँ अपना डाटा पे स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं। आप यहाँ इस फॉर्म के थ्रू सर्च भी कर सकते हैं। ये आपको एक क्राइटेरिया बटन नज़र आ रहा होगा। जब मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं किसी भी कैटेगरी में कोई भी फील्ड यहाँ सर्च कर सकता हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ एंटर्ड बाय में जॉन का रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं और यहाँ आके इधर आप फाइंड प्रीवियस या फाइंड नेक्स्ट पे कहीं भी क्लिक करके ये जॉन का डाटा आप लोग सर्च कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि आप अगर लेट्स सपोज गलती से यहाँ डेट गलत एंटर कर लेते हैं, हम लेट्स सपोज 2030 एंटर कर लेते हैं, तो यहाँ रिस्टोर के बटन पे जाके आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये 2025 वापस शो हो रहा है।
बस याद रहे कि जब तक आपने एंटर प्रेस नहीं किया और चेंजेस सेव नहीं किए तब तक आप रिस्टोर कर सकते हैं। डाटा एंट्री फॉर्म्स की एक और अच्छी बात यह है कि आप इसमें डाटा वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी कैटेगरी पर डाटा वैलिडेशन लगाते हैं वो फॉर्म पर भी अप्लाई हो जाता है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ डेट्स में डाटा वैलिडेशन लगाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टाफ एम्प्लॉयज़ डाटा में डेट को चेंज करें तो वो विद इन 1 ईयर रेंज में रहे। इसके लिए हम लोग ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन में इसको क्लिक कर लेंगे एंड एनी वैल्यू की जगह हम लोग यहाँ डेट सिलेक्ट करके अपनी स्टार्ट डेट मैं यहाँ 1/1/2025 एंड 1/1/2026 एंटर कर लूँगा एंड यहाँ एरर अलर्ट में जाके मैं एरर मैसेज टाइप कर लूँगा, प्लीज़ इनपुट डेट बिटवीन 25 एंड 26 और इधर मैं ओके क्लिक कर लूँगा। अब हम वापस यहाँ अपने फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ मैं एक न्यू रिकॉर्ड एंटर करूँगा। ये मैंने न्यू डेटा एंटर कर लिया और यहाँ डेट मैं अब डालूँगा 7 अगस्त और हम यहाँ गलती से 2030 एंटर करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखें हमें ये एरर मैसेज दे रहा है, प्लीज़ इनपुट डेट बिटवीन 25 एंड 26। अब हम यहाँ रीट्राई पे क्लिक करेंगे और यहाँ मैं अपनी डेट जो है इसको 2025 कर लूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें अब हमारा डाटा यहाँ ऐड हो चुका है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप फॉर्म्स को अपने मौजूदा टेबल्स पर भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आप चीज़ों को ढूंढ भी सकते हैं। मसलन मेरे पास एक यहाँ बड़ा टेबल है और मैं कोई स्पेसिफिक डाटा ढूंढना चाहता हूँ तो मैं यहाँ आकर अंदर फॉर्म पे क्लिक करूँगा और ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर मैं क्राइटेरिया पे क्लिक करूँगा और मैं अब वो स्टॉक लेवल ढूंढना चाहता हूँ जो 100 से अबव है। और फॉर्म्स की अच्छी बात यह है कि आप ये ग्रेटर दैन, लेस दैन और एस्टेरिक जैसे आप वाइल्ड कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अब स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर दैन 100 करता हूँ और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे इसने 120 के स्टॉक का सारी डिटेल दे दी है। अब फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये 200 की हमें डिटेल दे दी है एंड इस तरह 130 की हमें दे रहा है ये। तो बस इस तरह आप डाटा फॉर्म्स का इस्तेमाल अपने डाटा सेट्स पर कर सकते हैं ताकि डाटा इनपुट करना या ढूंढना आसान हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अगर आप एक्सेल में बेहतर होना चाहते हैं, अपनी एक्सेल की नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल लर्न अकाउंटिंग प्रो स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में आप अपनी कमेंट्स ज़रूर दें, ख़ास तौर पर अगर आपने डाटा एंट्री फॉर्म्स ट्राई किए हों या कोई सवाल हो। Thanks for watching. Keep learning, keep growing, and I'll see you in the next one. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लर्न अकाउंटिंग प्रो स्टूडियो। आज मैं आपको 5 मिनट में एक्सेल में एक सीधा सा स्प्रेडशीट कैसे बनाते हैं ये दिखाता हूँ। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स, सीधा काम। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हम लोग एक न्यू वर्कशीट पे आ जाएंगे और चलिए सबसे पहले सबसे आसान और तेज़ तरीका देखते हैं। एक्सेल में ओपन रिबन पे आप लोगों को यहाँ इंसर्ट टैब नज़र आ रहा होगा। यहाँ जाकर आपने टेबल पे क्लिक करना है। जब छोटी सी विंडो खुलेगी तो आपको बताना होगा कि टेबल किस सेल रेंज से शुरू करना है और कहाँ ख़त्म होना है। इसके लिए जिस सेल से टेबल शुरू करना है उस पर क्लिक करें। सो लेट्स सपोज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक। जब रेंज सेलेक्ट कर लें तो फिर आप लोगों ने ओके प्रेस करना है। तो ये कुछ इस तरह से आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब आपको टेबल का स्टाइल चूज करना है। ऊपर एक नया टैब नज़र आएगा आपको ये डिज़ाइन का। यहाँ से आप लोग इस फिल्टर बटन को ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड आप लोग अपना टोटल भी ऐड कर सकते हैं। टेबल का स्टाइल और अपीयरेंस के लिए थोड़ा सा आप लोगों ने इस साइड पे आकर आप लोग इसमें से कोई भी अपनी अपीयरेंस सेलेक्ट करके और उस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात,
ये इंसर्ट और टैब वाला तरीका हर सिचुएशन में आइडियल नहीं होता। ऐसे बनाई हुई टेबल में आपको कुछ डाटा वर्क करते वक्त लिमिटेशंस महसूस हो सकती हैं, इसलिए मैं एक दूसरा तरीका भी रिकमेंड करता हूं जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब उसे देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप सेल रेंज सेलेक्ट करें लाइक दिस, जितना भी आप लोग सेल रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं, और इस दफ़ा इंसर्ट टैब पर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लोगों ने अब यहाँ बॉर्डर्स वाले आइकन पे आ जाना है और इस लिस्ट पे क्लिक करके आपने ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट करना है। इससे आपके सिलेक्टेड रेंज में सिंपल ग्रिड लाइंस लग जाएंगी। अब मैं एक सिंपल टेबल बनाकर स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे ऊपर वाली रो में आप लोगों ने यहाँ अपना हेडिंग देनी है। हम लोग यहाँ कैपिटल लेटर्स में एक्सपेंस शीट टाइप कर लेंगे। अब हम इस फुल रो को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर लेंगे। इसका हम लोग साइज इंक्रीज कर लेंगे एंड इसको बोल्ड कर लेंगे। राइट। अब हम लोग यहाँ मंथ की हेडिंग दे देंगे और यहाँ इन कॉलम्स में मुझे 5 ईयर्स चाहिए, तो मैं ये एक्स्ट्रा जो कॉलम्स हैं अपने ये डिलीट कर दूंगा। इसको मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल एंड माइनस प्रेस करके यहाँ से एंटायर कॉलम डिलीट कर दूंगा। यहाँ हम लोग इसको ऑल बॉर्डर कर लेंगे। राइट। अब यहाँ मैं टाइप करूँगा अपना ईयर, जो लेटेस्ट ईयर है 2025, और इधर माउस को ड्रैग करके यहाँ मैं यहाँ तक ले आऊँगा एंड इस ड्रॉप डाउन से करके फिल सीरीज कर दूंगा। तो ये आपके 5 ईयर्स यहाँ आ चुके हैं। अब इनकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम। इनको सिलेक्ट करके इनका साइज इंक्रीज करके बोल्ड करके एंड सेंटर कर लूँगा। राइट। नीचे इस रो में हम लोग अपना फर्स्ट मंथ टाइप कर लेंगे, जनवरी, और आप लोगों को अब हर मंथ का नेम बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ से मैं इसको ऑटो फिल कर लूँगा। तो ये अगस्त तक एंड हमें यहाँ दिसंबर तक चाहिए। राइट। और इसको हम कंट्रोल माइनस कीबोर्ड में करके ये एंटायर रो में डिलीट कर दूँगा। राइट। अब आप लोग नोटिस करें कि यहाँ कुछ मंथ्स आपके यहाँ ओवरलैप कर रहे हैं। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ बी कॉलम में आके जब माउस कर्सर ऐसा दिखे तो यहाँ अपने माउस को डबल क्लिक करना है एंड ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ कुछ अपना डाटा एंटर करूँगा। जब आप लोग यहाँ अपना डाटा एंटर कर लें तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा करेंसी का यहाँ जो सिंबल है वो हम कैसे ऐड करें। उसके लिए आप ये सब फील्ड्स जो हैं इसको सिलेक्ट कर लेंगे और राइट माउस क्लिक करके आपने यहाँ फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ करेंसी में आके आपने ये डॉलर को सिलेक्ट करके एंड डेसिमल प्लेसेस को 0 करके ओके प्रेस करना है। तो ये आपकी यहाँ सेपरेटर्स भी इसमें एंटर हो गए और आपकी करेंसी साइन भी इधर शो हो रहा है। अब यहाँ दिसंबर के नीचे मुझे टोटल का फिगर चाहिए, तो यहाँ मैं टोटल टाइप करूँगा। अब बजाय इसके कि हम लोग यहाँ बॉर्डर्स लगाएं और हम लोग डॉलर साइंस के लिए एक एक फिगर को फिर से सिलेक्ट करें, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, जो दिसंबर वाली जो रेंज है इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर वाले आइकन को क्लिक करना है एंड सिंपली यहाँ आके इसको आपने क्लिक करके अपने टोटल को फॉर्मेट कर लेना है। यहाँ अब आप देखेंगे आपका डॉलर साइन ऑटोमेटिकली शो होगा जो भी फिगर आप एंटर करें। कंट्रोल Z करके हम लोग अंडू करेंगे एंड टोटल के लिए हम लोग अब कीबोर्ड पे शॉर्टकट यूज़ करेंगे Alt एंड प्लस, और ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से रेंज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एंड हमारा टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब हम कंट्रोल C करके यहाँ कंट्रोल V करके अपने टोटल स्पेस कर देंगे और आप लोग देख सकते हैं कि ये
सारे कॉलम्स के टोटल्स कैलकुलेट हो चुके हैं। राइट, आखिर में मैं अपनी स्प्रेडशीट को थोड़ी सी स्टाइल एनहेंस करने के लिए फॉर्मेटिंग करूँगा। इस टोटल हेडर्स में आके यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा ये ब्लू कलर दे देंगे एंड यहाँ आके इसको सिलेक्ट करके थोड़ा लाइटर शेड हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एंड टोटल पे आके हम लोग मोर कलर्स पे जाके ये वाला शेड एंटर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपनी डिफरेंट समरी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सेल के एडवांस फार्मूलाज और अकाउंटिंग टेम्पलेट्स पर डिटेल में लेसन्स बनाऊं तो लर्न अकाउंटिंग प्रोस्ट वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and I'll see you in the next one.